Assalamu alaikum, everyone. I hope you guys are all doing well and are preparing well for your exam tomorrow. So in this particular session, I am going to be discussing some of the more difficult questions from the 2022 papers. Paper two जो है 2022 वाले सारे नवंबर और जून के 4 पेपर्स में से जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे. Walaikum assalam. These are the questions that I'll be doing. October, November 2022, paper 2-1 say I'll be doing 6, 7, 10, 11. And then paper 2-2 say 4, 5, 6, 7, 9. Or per May, June 2022, paper 2-1 say 7 or 9. Or per May, June 22, paper 2-2 say 5 or 10. These are the questions that I plan to do in this particular session. Okay, so all the difficult questions from the 2022 paper 2s for O-level maths 4024. Okay, so that's the plan. You can also find a lot of other helpful content in the description of this video. You'll find other yearly past papers from 2016 to 2021. You'll find a playlist for that. You'll find topical videos on a number of topics. And along with that, those of you who take AdMaths, you'll also find a lot of content on AdMaths there as well. All right, so let's begin with this. Let's start with this. We're starting from, first of all, with this paper, November 2022, paper 2-1. Isse hum start kare. I'm going to start with question number 6 of this paper, first of all. Okay, so we have this position vector of point A, which is 4, 7, and the position vector of a point B. We are given that that is 9, 2. We need to find the column vector AB, first of all. Okay, so I'm just gonna check if it's working. Yeah, no, it's working. Okay, so question number 6, let's start with this first of all. The position vector of point A is 4, 7, and the position vector of point B is 9, 2. We need to find the column vector AB. अच्छा अब देखें, position vectors दिए हुए हैं, किसी भी vector को आपने position vectors की form में की terms में आप कैसे लिख सकते हो? Position vector of the second point, so that's OB minus the position vector of the first point. So that will be OB minus OA. AB vector kya hoega? It will be OB minus OA. Let's see what that turns out to be. OB is 9, 2. Subtract from that 4, 7. So that's pretty straightforward. This turns out to be 5 and minus 5. That should be the vector AB, 5 minus 5. That's the first part. And the second part, it says find the magnitude of the vector AB. How do you figure this out? Magnitude ke liye kya karte hain? You can just use this formula, x square plus y square is the square root. So you can just do that. 5 ka square plus minus 5 ka square. That's going to be 25 plus 25 is the square root, and that turns out to be square root of 50. Okay, that's also pretty straightforward. You can leave it like this. आप ऐसे भी छोड़ सकते हो इसको. Or if you want, you can also write down a decimal value for this. लेकिन अगर decimals में लिखेंगे तो minimum 3 significant figures आपको लिखने होंगे. वो इस केस में क्या होगा? 7.07, and that's your magnitude. Okay, Achha, next part says ABCD is a parallelogram with sides AB, BC, CD, and DA. All right, so now we have a parallelogram ABCD. The vector BC is given, that's minus 4, 1. We need to find the coordinates of the point C and D. Let's see how we can figure that out. Now, first of all, let me make a parallelogram here. Let's say we have a parallelogram that looks maybe like this. Okay. Now, let's mark those points here. इनमें से हम 2 points को A और B कह लेते हैं. ठीक है, let's call one point here A, let's say, another point B, another point C, and another point D. Now, of course, this is not to scale, तो ये exact आपके यहाँ पे coordinates मतलब sketch बहुत accurate नहीं होएगा, but this is just for understanding, right? अब देखें उसने क्या दिया हुआ है BC vector, यानी कि B से C पे जाना है अगर आपको तो क्या करना है? आपको करना है minus 4, 1. Now, again, as I said, the figure is not accurate, so don't worry about that. What you're given is कि B से C पे जाने के लिए, so if the coordinates of B are given, वो हमने हमारे पास ऊपर है यहाँ पे, इसका position vector है 9, 2, उसको अगर आप coordinates form में लिख दो, आपके B के coordinates होंगे 9 and 2. इससे अगर आपको जाना है C के ऊपर,
तो आपको क्या करना है, x कोऑर्डिनेट में से 4 माइनस करना है और y कोऑर्डिनेट में 1 ऐड करना है। तो B से C पे जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, all you have to do is you have to subtract 4 from the x coordinate and add 1 to the y coordinate, and that will give you the coordinates of the point C. 9 minus 4, what's that? That's 5. 2 plus 1, that is 3. That's one way of doing this. Another way of doing this could be using vectors. आप vectors भी use कर सकते थे. आप क्या find कर सकते हैं, C का position vector, right? और उसको coordinates form में लिखेंगे तो उसके coordinates आ जाएंगे. OC could be written as OB plus BC. That's another way of thinking about this. OB vector आपको पता है पिछले part से, उसने आपको बताया हुआ था, that was 9 2. Plus BC, the vector BC is minus 4 1. तो जो आपका OC vector आ जाता है इससे, that would have been 5 3. और उसको आप coordinates form में लिख दोगे तो वो 5 3 आ जाएगा. Okay, so आप दोनों में से किसी भी तरह से कर सकते हैं. ठीक है? So now you have the point A, you have the point B, you have the point C. What about point D now? How do you figure that out? That's the problem now, right? आपके पास देखें BC vector आ गया है. What about the vector AD? BC vector उसने दिया हुआ था. अगर BC vector आपको given है, that is minus 4 1 and it's a parallelogram. तो parallelogram में जो opposite vectors होते हैं, they're supposed to be equal. So ये जो vector BC है, that should be the same as the vector AD. These two vectors have to be the same. तो ये जो vectors ने दिया हुआ है, we can also say that's the same as the vector AD. तो अगर हमें OD निकालना होता अगर उसी मेथड से, अगेन वी could use any of those two methods again here. अगर हम OD फाइंड करना चाहते हैं, we could say let's go from O to A and then we could go from A to D. Now since AD is supposed to be minus 4 and 1 as well, we could find OD from this, and OD would have turned out to be OA plus so OA is 4 7 and AD we know that is the same as minus 4 1 as well. यहाँ पे हम minus 4 1 input करते, and this turns out to be 0 and 8. इसको अगर आप coordinates की form में लिख दोगे तो ये हो जाएगा 0x coordinate and 8y coordinate. So this is the point D, और C point क्या था? This point C is 5 and 3. These are the 2 points that we were looking for. So again, you can do the vector method, और इस तरह आप coordinates में भी इस तरह से plus minus करके इस तरह से समझ सकते हो. ठीक है? That was part A of this question. Let's move on. Part B. It says P is the point R4 and Q is the point PU. The midpoint of the line PQ is 1 3. The gradient of line PQ is minus 1 over 4. We need to find the value of each of R, T, and U. How do you figure that out? So एक point P है कहीं पे, एक point R है कहीं पे. So we have a point P here, we have another point Q somewhere, and we also, yeah, so दो ही points हैं, in fact, P and Q. Midpoint of PQ is 1 3. तो आप क्या करें, उनका midpoint निकालें. That would be, so let's call this x1, let's call this y1, let's call this x2, let's call this y2. x1 plus x2 over 2, so that's R plus T over 2. That's the midpoint of PQ, right? Midpoint of PQ, that would be R plus T over 2 and 4 plus U over 2. उसने क्या कहा, उसने कहा midpoint is supposed to be 1 3. तो आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो कि अच्छा midpoint उसने दिया हुआ है तो इसके जो लेफ्ट साइड पे आप क्या लिख दो, 1 3 लिख दो. Now since they're supposed to be equal, 1 should be equal to R plus T over 2 and 3 should be equal to 4 plus U over 2. इससे आपके पास दो equations आती हैं सबसे पहले. Let's solve these two equations. Let's write those two equations down first of all. एक आपके पास बनती है R plus T over 2 equals 1 and the other equation is 4 plus U over 2 equals 3. अच्छा, ये right वाली equation हम solve कर सकते हैं directly because that gives us 4 plus U equals 6 and U turns out to be 2 from this. अब ये दूसरी इक्वेशन है, इसमें दो अननोन्स हैं और सिर्फ एक इक्वेशन है. एक इक्वेशन से दो अननोन्स तो हम नहीं फिगर आउट कर सकते किसी तरह से, तो हमें क्या करना आएगा, हमें दूसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जो उसने दिया हुआ है. उसने कहा ग्रेडियंट ऑफ लाइन PQ is minus 1 over 4. तो अगर आप क्या कर सकते हो, ग्रेडियंट को minus 1 over 4 के इक्वल कर सकते हो. Let's do that here as well.
gradient find कर लेते हैं, y2 minus y1 over x2 minus x1. What's that supposed to be? उसने कहा है the gradient is minus 1 over 4. Let's find our own gradient. y2 minus y1, that's u minus 4 divided by x2 minus x1, that's t minus r. That is equal to minus 1 over 4. That's another equation that we have. अब हमने already u की value figure out कर ली है. We could input this value of u there, and that would give us 2 minus 4 over t minus r equals minus 1 over 4. Now, the numerator is going to be minus 2 here. We can cross multiply. 4 यहाँ पे आके multiply होएगा minus 2 के साथ. That is going to give us minus 8. On the other side, t minus r into minus 1. That is going to give us r minus t. तो यहाँ से हमारे पास एक और equation आ जाती है r और t के terms में. Now, what we have to do is we have to solve these two equations simultaneously. We have one equation here and we have another equation here. We can solve these two equations simultaneously to find the values for r and t. अच्छा, first equation, आप इसमें elimination कर लें, substitution कर लें, कुछ भी कर सकते हैं. So I'm actually using these two equations. So one is this equation here and another is this equation here. ये दो equations हम use कर रहे हैं. First equation से अगर मैं let's say r को subject बना लेता हूँ, what would that give me? R plus t equals 2. And I could have r equal to 2 minus t from this. I could put this in the other equation. इसको जाके वहाँ पे input कर दें. That gives me minus 8 equals 2 minus t minus t. And that is 2 minus 2t equals minus 8. 2t को left पे ले जाएं, 8 को right पे ले जाएं. That gives you 2t equals 10 and the value of t turns out to be 5. So t भी आपके पास आ गया, that is 5. Put this back in the other equation. R equals 2 minus 5 and the value of r turns out to be minus 3. These were the three values that we were looking for. We were looking for the values for r, u, and t. R equals minus 3, u equals 2, and t equals 5. We have end पे जाके यहाँ पे लिख देंगे. U is equal to 2, r is minus 3, and t is equal to 5. Okay, and that's it. That's question number 6 from this paper. Let's move on to the next one. The next one that I want to do from this paper is question number 7. Let's have a look at this. Okay, now this is a transformation question. We have two figures drawn here, A and B. These are two trapeziums. Now, in the first part, it says, describe fully the single transformation that maps shape A onto shape B. Okay, A से B पे जाना है. देखें, exactly वही shape है, orientation भी नहीं change हुई है, बस वो एक तरह से shift हो गई है. Shape A जो है वो shape B पे चले गई है. So you can clearly see it's a translation. क्योंकि आपकी figure shift हो गई है. So how do you describe a translation? The one thing that you're going to do is you're going to write that it's a translation. ये आपने word लिखना है और फिर आपने translation vector लिखना है. A से B पे जा रहे हैं तो आप कोई भी एक point लें और इसका corresponding point देख लें दूसरे figure के अंदर. So how many units do you have to move for that? You have to move 2 units right. So in the translation vector, the x component is going to be 2. And then you have to go 1, 2, 3, 4, 5. 5 units down. So the y component therefore is going to be minus 5 here. So it's a translation 2 minus 5. That's what we were looking for. Yeah, good. So that's the translation. Now in part B, it says reflect shape A in the x-axis. Okay, so shape A को reflect करके आपने diagram पे show करना है. That's pretty straightforward. X-axis में reflect करना है, right? Shape A को. Let's see how we can do that. जितना distance हर point का x-axis के ऊपर है उतना ही दूसरी साइड पे हो जाएगा. या आप coordinates का भी सोच सकते हैं. हर y कोऑर्डिनेट जो है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना. तो ये 3 वाला पॉइंट किधर चला जाएगा? -3 पर चला जाएगा. इसी तरह ये वाला पॉइंट भी नीचे -3 पर चला जाएगा. जो पॉइंट्स 4 के ऊपर है इधर वो -4 पर चले जाएंगे उसी x कोऑर्डिनेट के साथ. तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा और इसी तरह से जो लास्ट पॉइंट है ये वाला, ये 4 यूनिट्स ऊपर है, ये 4 यूनिट्स नीचे जाके इधर आ जाएगा. सो द रिफ्लेक्शन दैट वी हैव हियर इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. ठीक है, ये आपने रिफ्लेक्ट करनी थी फिगर. In the second part, this is what the reflection is going to look like. Let's call this A dash. उसने कोई नाम देने के लिए नहीं कहा. आप इसको as it is भी छोड़ सकते हैं. Or if you want to name it, you can say this is A complement. Okay. All right. Yeah. So that's good. Now it says,
enlarge shape A by scale factor 2, center 5, 4. How do you do that now? Shape A को आपने enlarge करना है, scale factor 2 and center 5, 4. Okay, center is supposed to be 5, 4. पहले center mark कर लेते हैं. 5, 4, that is going to be here. ये आपका center of enlargement है. And what's the scale factor? The scale factor is 2. तो जितना distance हर point का आपके पास है originally, center of enlargement से उससे 2 times हो जाएगा. आपने उसको double कर देना है बस. So let's take one point at a time. तो ये वाला point देखते हैं पहले. It's 2 units away. इससे आगे 2 units और चला जाएगा. It's going to come here. ये point यहाँ पर आ गया आपका पहला point. ठीक है. अच्छा, let's take another point. ये point कितना ये distance पे है? 3 units के distance पे. तो ये आगे 3 units और चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा. So these are 2 points that we have in the enlarged diagram. अच्छा, what else? ये देखें ये third point. ये कितने distance के ऊपर है? Use a different color for this. This is the center of enlargement. Now, let's take this third point. जितने distance के ऊपर ये है, इसको आपने 2 से multiply कर देना है. ये point इधर आ जाएगा. This is the third point that we have. And then finally, we have the fourth point. And that's this one. ये भी आप देखें. 1, 2, 3, 4. 4 boxes आ रहे हैं. Left side पे 1 down. तो आप 4 boxes और left चले जाएंगे और 1 और down चले जाएंगे. And that's going to come here. These are the 4 points that we have in the enlarged diagram. इनको आप join कर देंगे straight lines के साथ, and that is going to be your enlarged diagram. ठीक है, ये diagram हम draw कर लेते हैं. Let's join these points now. इन points को join कर देते हैं, उससे हमारे पास ये enlarged diagram आ जाएगी. So this is the vertical line that we have, and then we have line here like this, and we have a horizontal line like this. And we have another horizontal line like this. This is going to be our enlarged diagram with that center of rotation, center of enlargement. Okay. Acha. So that was part C of this. Let's move on. Now it says transformation P is represented by this matrix 0, -1, 1, 0. ये आपके पास एक transformation है. That's represented by this matrix. Okay. This transformation maps shape A onto shape C. Shape A से आपने कहाँ पे जाना है? Shape C पर जाना है. अब आपने क्या करना है? आपने वो shape C draw करनी है. अब now there are 2 ways of thinking about this. You could either figure out ये transformation, ये matrix कौन सी transformation को represent कर रहा है, फिर आप वो transformation directly उस diagram पे apply कर दें. That's one way to think about this. And another way to think about this is कि आप उस डायग्राम के कोऑर्डिनेट, उस फिगर के कोऑर्डिनेट्स देखें और उसको एक मैट्रिक्स बना के उससे मल्टीप्लाई कर दें. ये मैट्रिक्स बनाने वाला मेथड इज गोइंग टू बी स्लाइटली लॉन्गर, बट यू कैन डू दैट. दैट्स गोइंग टू वर्क. इट्स ओनली 2 marks. इफ यू रिमेंबर द मैट्रिक्स, दैट्स गोइंग टू मेक दिस मच क्विकर. अब या तो आपको मैट्रिक्स याद हो, ठीक है, या आप ये फिगर आउट भी कर सकते हैं. रिमेंबर, ये हम एक डायग्राम बना सकते हैं छोटी सी, उससे फिगर आउट किया जा सकता है. इसमें 4 पॉइंट्स आपने मार्क कर लेने हैं. उससे आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आपको याद नहीं है तो. ठीक है, तो बेसिकली 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं, 1, 0 एंड 0, 1. ये डायग्राम इस मैट्रिक्स में क्या हो रहा है? ये पॉइंट्स किधर जा रहे हैं? ये पॉइंट्स आपके जा रहे हैं 0, 1 पे और -1, 0 पे. तो 1, 0 वाला पॉइंट, रिमेंबर जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है ना, दैट इज दिस मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1. ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है. ये पॉइंट्स किधर जा रहे हैं? एक पॉइंट बन रहा है जाके 0, 1 और दूसरा पॉइंट बन रहा है जाके -1, 0. अच्छा, तो 1, 0 वाला पॉइंट किधर चला गया? 0, 1 पे चला गया. तो ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है. ठीक है, अच्छा, एक तो ये चीज हो रही है. फिर 0, 1 वाला पॉइंट किधर जा रहा है वो देखते हैं. वो जा रहा है -1, 0 पे. तो ये ऊपर वाला पॉइंट इधर जा रहा है. नाउ यू कैन फिगर आउट कि अच्छा ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है. 1, 0 वाला पॉइंट इधर चला गया और -1, 0 वाला पॉइंट वो आपका इधर नीचे आ गया, राइट? तो इससे आपको पता चल गया कि ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है. दिस मैट्रिक्स एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज 90 degrees anti-clockwise rotation.
with center of rotation 0 0. रिमेंबर मेट्रिसेस में जब भी आपके पास आएगा सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, वो हमेशा ओरिजिन ही हुआ करेंगे. जब मैट्रिक्स आ जाएगा तो ओरिजिन ही हुआ करेगा, और कुछ नहीं हो सकता, वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा. ठीक है, तो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, सेंटर ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स वाले फॉर्म, मैट्रिक्स वाले केस के अंदर 0 0 ही हुआ करेगा. सो दिस इज अ 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन विद सेंटर 0 0. अब आपको पता चल गया ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो आप जाके इसको खुद से आप कर सकते हो. ए को आपने सी पे मैप करना है, 90 डिग्रीज रोटेट करना है एसेंशियली एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, नाउ हाउ कैन वी डू दैट? नाउ अगेन देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस. आपने ड्रॉ करने के लिए कहा है, उसने कहा ड्रॉ करनी है शेप. अच्छा, let's do it one point at a time. So again, this is the first point. Let's say इसको आप देखें, this is 3 units to the right and it's 4 units up, right? It's 3 right and 4 up. इसको जब रोटेट करेंगे and 90 degrees anti clockwise, तो ये कहाँ हो जाए, कहाँ पे चला जाएगा ये? रिमेंबर, आप इस तरह से सोच सकते हो इसको, अगर आपने डायग्राम से नहीं करना डायरेक्टली, अप राइट लेफ्ट एंड डाउन. राइट जो है वो अप पे चला जाएगा और अप कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट पे चला जाएगा. तो 3 राइट जो है ओरिजिन से, वो क्या हो जाएगा, राइट अप पे चला गया, तो ये 3 अप हो जाएगा. और अप किधर चला गया, लेफ्ट पे. सो दिस इज गोइंग टू बी 4 लेफ्ट. तो आपके ये पॉइंट किधर चला जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट. This point is going to go 3 up and 4 left. This is going to be the point that we're looking for. तो ये एक point जो पहला वाला point है वो इधर चला जाएगा, right? अच्छा, अब दूसरा point देखते हैं. Let's say हम ये वाला point देख रहे हैं, this one. This is 1 right and 3 up. 1 right, 3 up. Again, right कहाँ चला जाएगा, up. So that's 1 up. Up कहाँ चला जाएगा, left. So that's 3 left. So this point is going to go 1 up and then 3 left. That's this point here. ये आपका second point आ गया. ठीक है. What about the third point after that? This one. Where is this going to go? This is 2 right and 4 up. Again, using the same logic, this is going to go 2 up and 4 left. तो ये आ जाएगा इस पोजीशन के ऊपर. And then finally we have this point. This is 3 right and 4 up. ये कहाँ चला जाएगा, 3 up and 3 right and 4 up था, तो ये 3 up और 4 left चला जाएगा. अच्छा, I'm sorry, जो green वाला point था ना, that was 3 and 3. तो मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 3 right and 3 up था, वरना वो तो overlap कर रहे हैं. The green one was 3 up and 3 left. तो वो वाला पॉइंट एक्चुअली इधर होना चाहिए था, इस पॉइंट के ऊपर. ठीक है. और ये जो चौथा पॉइंट है, दिस इज 3 राइट 4 अप, तो दैट्स गोइंग टू बी 3 अप एंड 4 लेफ्ट एंड दैट पॉइंट इज गोइंग टू कम हियर. ठीक है. अच्छा, रोटेशन में वैसे ये थोड़ा सा इसमें भी इस तरह से भी लंबा हो गया, मैट्रिक्स से भी उतना ही टाइम लग जाना था, मैट्रिक्स भी कर सकते थे, बट इवेंचुअली द शेप दैट यू end up getting in this case is going to look like this. This is your transformed figure after that rotation of 90 degrees anti-clockwise. ठीक है, ये आपकी फाइनल डायग्राम आ जाएगी. ठीक हो गया. This is your trapezium C, your figure C. ये उसने कहा था लेबल करना है आप. Again, आप मैट्रिक्स से करना चाहें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं. That should give you the same result as well. That's also okay. ठीक है. अच्छा, let's move on. Now it says describe fully the single transformation that maps shape A onto C. अब ये तो हमने पहले फिगर आउट कर लिया था, ये मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे उसने कहा डिस्क्राइब करना है. लेकिन 3 मार्क्स का है, ये सारी वर्किंग हमने पहले सोच ली है, मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. We just have to describe that here now. अब इसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना है, क्या क्या चीजें लिखनी है. रोटेशन में क्या लिखना होता है, you have to write this is rotation and then the angle and direction of rotation. So this is 90 degrees anti-clockwise rotation. Anti-clockwise rotation that earns you 2 marks. 90 degrees anti-clockwise, 1 mark for that.
rotation, second mark for that, and you also have to tell the center of rotation. What's the center of rotation? Matrix वाले केस में center of rotation हमेशा क्या हुआ करेगा? वो हमेशा origin ही हुआ करेगा. With center of rotation at 0, 0. That is going to be your center of rotation. Yes. So that is what you write there. Okay. Achha, now it says, find the matrix representing the transformation that maps C onto A. All right. So now it's the opposite. A से C पे जा रहे थे, तो वो क्या था? 90 degrees anti-clockwise rotation. इसका reverse क्या होएगा? वो कह रहे हैं अब C से A पे जाने. So that's the opposite transformation. And 90 degrees anti-clockwise का reverse क्या होएगा? 90 degrees clockwise. इसका मैट्रिक्स लिखना है आपको. अगेन अगर तो आपने याद किया हुआ है तो आप वो लिख दो, दैट्स ओके. अगर आपको नहीं याद तो आप इस तरह से जल्दी से फिगर आउट कर सकते हो. ओरिजिनल पॉइंट्स आपके कौन से लेने होते हैं? आपने 1 0 0 1. दिस इज 1 point 1 0 and this is another point that is 0 1. and 90 degrees clockwise rotation करेंगे तो 1 0 किधर चला जाएगा? इधर नीचे आ जाएगा. ये कौन सा पॉइंट होगा? 0 -1. so it's going to be 0 -1. and then जो ऊपर वाला पॉइंट है वो इधर आ जाएगा 1 0 पे. that's 1 0. तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा? 0 1 -1 0. ये आपने मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देना है. अगर आपको याद है आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, वरना आप इस तरह से जल्दी से फिगर आउट कर सकते हैं. ठीक है. That's what you get in the last question, the last part here. That was slightly tricky, part D especially. Okay, I hope that makes sense. Let's move on to the next one. Okay, so next difficult question from this paper was question number 10. Let's have a look at this. It says the diagram shows the positions of 3 towns P, Q, and R. Q is on a bearing of 52 degrees from P. Okay, अब देखें डायग्राम उसने शो नहीं किया तो आपको इसको सही तरह से इंटरप्रेट करना है. Q is on a bearing of 50 degrees from P. From के बाद जो वर्ड लेटर आ रहा होता है उससे वो आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है. उस पर आपने नॉर्थ बनाना है. तो नॉर्थ कहाँ बनेगा? पॉइंट P के ऊपर. तो नॉर्थ उसने बनाया हुआ है वहां पे. उससे क्लॉकवाइज जब आप एंगल मेजर कर रहे हो Q पे जो लाइन जा रही है उसका, तो ये एंगल कितना है? उसने ये बताया है कि दिस एंगल इज 52 डिग्रीज. ये आप डायग्राम पे मार्क कर लें. फिर उसने कुछ डिस्टेंसेस दिया है जो डायग्राम पे नजर आ रहे हैं. It says calculate the bearing of R from Q. Okay, bearing of R from Q. From Q क्या मतलब? Q के ऊपर आपका नॉर्थ बनेगा इसके लिए. So this is the north that you have. R की bearing निकालनी है Q से. They are basically asking you for this angle. ये एंगल हमें फिगर आउट करना है किसी तरह से. Now how can you figure this out? अब थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा. How do we get this angle? अब इसमें डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते. हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? लेट्स थिंक अबाउट दैट. ये एंगल 52 डिग्रीज है जो उसने ये बताया हुआ है. इसका क्या मतलब है? व्हाट कैन वी से एनीथिंग अबाउट दिस एंगल? ये एंगल कितना होना चाहिए? 180 - 52, राइट? अगर ये 52 है, ये भी एक वर्टिकल लाइन है, तो इसके साइड वाला एंगल कितना होना चाहिए? 180 - 52. If you can't figure that out, you can just extend this line. That might make it easier. 52 डिग्रीज ये है, तो इसका ये ऑल्टरनेट एंगल इधर बन रहा है 52. अगर ये 52 है तो ऊपर वाला एंगल कितना होना चाहिए? It should be 180 - 52 and that should be 128 डिग्रीज. तो ये ऊपर वाला एंगल 128 होना चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से आप ये फिगर आउट कर सकते हो. अब अगर आप ये एंगल फिगर आउट कर लें जो ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल है, ये वाला एंगल, तो 360 में से 128 और ये एंगल माइनस करेंगे तो हमें ये बाहर वाला एंगल मिल जाएगा जो हमें चाहिए. बेयरिंग मिल जाएगी हमें. सो दैट्स व्हाट वी डू. लेट्स कॉल दिस एंगल समथिंग. लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा. ये थीटा अगर मिल जाए ना हमें, तो हम आराम से वो बेयरिंग निकाल सकते हैं. तो अब हम ट्रायंगल को सोचते हैं. ट्रायंगल को देख के हम देखते हैं थीटा कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है. वी हैव 3 sides given in the triangle. We have 11.5, we have 17.2, we have 14.6. 3 sides दी हुई हैं, एक एंगल निकालना है. Which rule can we use? हमारे पास पेयर नहीं है, कोई साइन रूल नहीं यूज कर सकते, राइट? तो हमारे पास कोई भी एंगल नहीं है गिवन. ओके, तो हम साइन रूल नहीं कर सकते. तो हम क्या करना पड़ेगा? हमें कोसाइन रूल यूज करना पड़ेगा. अब कोसाइन रूल की 2 फॉर्म्स होती हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं.
अगर आपको ये एंगल वाली फॉर्म याद है, इट लुक्स लाइक दिस, cos थीटा इक्वल्स, और एक्चुअली बी मोर प्रिसाइज है, cos ऑफ एंगल ए अगर आपने निकालना हो किसी किसी पॉइंट के ऊपर, तो उसमें आपका ये फॉर्मूला कैसे लगता है, दिस लुक्स लाइक दिस, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। अगर आपको ये याद नहीं है, दूसरी वाली फॉर्म याद है, दैट्स आल्सो परफेक्टली ओके। ए स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ ए। उसी को रीअरेंज करके आपके पास ये दूसरी फॉर्म आती है, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज इनपुट वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। एंगल जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी जो ऑपोजिट साइड है ना, वो ये ए है, तो वो आपने ध्यान रखना है बस। इस तरह जो दूसरी फॉर्म होती है, उसमें जो एंगल होता है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये लेफ्ट साइड पर आ रही होती है, तो आपने बस उसके लिए उसका ध्यान रखना है। एंड देन यू जस्ट हैव टू इनपुट वैल्यूज। हम क्या कह सकते हैं, ऑपोजिट साइड हम इसको ए कह लेंगे, ठीक है, और फिर बाकी दोनों में से किसी को भी बी कह लें, किसी को भी सी कह लें, दैट डजंट मैटर। जस्ट इनपुट वैल्यूज, बी स्क्वायर, सो दैट्स 14.6 स्क्वायर्ड, plus c squared, that's 11.5 squared, minus 17.2 squared. That's what you have in the numerator. In the denominator, you would have 2 into b into c. B is 14.6 and c is 11.5. ये आप पूरा कैलकुलेटर में डालें, इसको evaluate करें, देखें आपके पास cos a किसके इक्वल आता है। Let's figure this out. 14.6 squared plus 11.5 squared minus 17.2 squared divided by 2 and 14.6 and also 11.5. Okay, this is giving me cos of a equal to 0.1476. अब इसका इनवर्स निकाल लें, तो वो जो एंगल था उस एंगल को हम ए कह लें, यहाँ पे एंगल को क्यू है एक्चुअली, बट जो एंगल जो भी था हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, जिसको हम एक्चुअली थीटा हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेट्स सी व्हाट दैट टर्न्स आउट टू बी। cos इनवर्स ऑफ दिस नंबर इज 81.5 डिग्रीज। वो जो एंगल थीटा था ऊपर, हमारे पास क्या आ गया, 81.5 डिग्रीज, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमने फिगर आउट कर ली। ओके, सो नाउ वी हैव दोस टू एंगल्स, वी हैव दिस एंगल हियर, वी हैव 128 डिग्रीज, तो बेयरिंग हम निकाल सकते हैं। बेयरिंग क्या हो जाएगी, बेयरिंग इज जस्ट गोइंग टू बी 360। देखें ये पूरा सर्कल है, सर्कल में टोटल एंगल 360 होता है, उसमें से हम 128 माइनस कर देते हैं, और हम ये 81.5 degrees minus कर देते हैं, that is going to give us the bearing that we are looking for here. Let's see what this turns out to be. 360 minus 128 minus 81.5, and that's giving me 150.5 degrees, and that's our bearing that we were looking for, 150.5 degrees. ये आप यहाँ पे लिख देंगे, that's your final answer. ओके, डिग्रीज वाले आंसर्स को आपने मिनिमम 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना होता है, मिनिमम 1 डेसिमल प्लेस, ज्यादा लिखते हैं दैट्स ओके, बट आइडियली 1 डेसिमल प्लेस तक आप लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी says A is a point on horizontal ground. ओके, अब डायग्राम देखते हैं। A is a point on horizontal ground. अच्छा, डायग्राम पे तो नहीं लिखा हुआ कहीं पे। The angle of elevation of the top of a vertical mast from A is 68 degrees correct to the nearest degree. अच्छा, उसने ये, this is not really relevant to the first part. Yeah, so it's not relevant. इसमें कोई भी point, ये different एक point है। Point A is a point on horizontal ground. Okay, so let's say we have this point A here. The angle of elevation of the top of a vertical mast from A is 68 degrees. So vertical mast, so basically we have let's say this horizontal ground. अब कहीं पे एक vertical mast है, which may be, oops, that's too big. Let's say we have a mast like this. उसने कहा है A से जो एंगल बन रहा है इसके टॉप का, लेट्स कॉल दिस पॉइंट T, that is equal to 68 degrees. That's the information that we're given, but this is correct to the nearest degree. Okay, it's correct to the nearest degree. The distance of the base of the mast from A is 45 meters. Okay, base of the mast, so base is basically this point here. From A, that's 45 meters. ये distance दिया हुआ है, and that is correct to the nearest meter.
कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द हाइट ऑफ द मास्ट। हाइट निकालनी तो बेसिकली ये एच आपको निकालना है। इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, हम कैसे हाइट निकालेंगे? एंगल के हिसाब से दिस इज ऑपोजिट, एच इज ऑपोजिट एंड दिस इज एडजेसेंट। ऑपोजिट और एडजेसेंट में कौन सी रेशियो होती है? इट्स tan. So we are essentially looking for tan theta. We are actually going to use tan theta equal to h over the length AB. So h क्या होएगा? H is going to be equal to AB multiplied by tan theta. That is what we want to do eventually. अब देखिए उसने क्या कहा है। उसने कहा है हाइट की लोअर बाउंड चाहिए, हाइट की लोअर बाउंड चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी और tan थीटा, दे आर बोथ मल्टीप्लाइंग। यू वांट h टू बी मिनिमम। लोअर बाउंड का मतलब है आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए हाइट की। इसका मतलब ये हुआ हमें ए बी की भी मिनिमम वैल्यू लेनी है और थीटा की भी मिनिमम वैल्यू लेनी है, बिकॉज थीटा जितना छोटा होएगा उसका tan भी उतना ही छोटा होएगा। तो इन दोनों की लोअर बाउंड्स यूज करेंगे इस केस के अंदर, बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। तो हमें दोनों छोटे छोटे नंबर्स यूज करने हैं। मिनिमम नंबर्स क्या हो सकते हैं? 68 डिग्रीज करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री का मतलब क्या है? नियरेस्ट डिग्री मीन्स नियरेस्ट 1 डिग्री, इसका हाफ किया क्या आता है? 0.5। तो 68 में 0.5 माइनस करें और 0.5 प्लस करें, तो असल में ये नंबर जो है ना इनके दरमियान में कहीं पर है। हमें क्या करना है? हमें लोअर बाउंड यूज करनी है इसमें, ठीक है। इसी तरह से 45 मीटर्स इज गिवन टू करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। दैट मींस 0.5 मीटर उससे कम हो सकता है, 0.5 मीटर ज्यादा हो सकता है। सो ये एक्चुअल नंबर क्या है? दिस इज बिटवीन 44.5 एंड 45.5। अगेन वी आर लुकिंग फॉर द लोअर बाउंड, और ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो रही है। मल्टीप्लाई करने पे हमें फाइनल आंसर अगर लोएस्ट चाहिए तो हमें दोनों नंबर्स ही मिनिमम यूज करने चाहिए। तो हम यहाँ पे कौन सा नंबर्स इनपुट करेंगे? AB की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, द लेंथ AB 45 मीटर्स की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे क्या बनती है? 44.5। और थीटा की भी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू which is 67.5 degrees here. And now we just evaluate this on our calculator and see what that turns out to be. 44.5 multiplied by tan of 67.5 degrees. And that is giving me 107.4 degrees. 4 meters, sorry. So 107.4 meters. And that is your final answer here. That's the lower bound of the height that we were looking for. Okay, that was question number 10 from this paper. The next difficult question from this paper is question number 11. As the first part does not look that difficult. Yeah, second part is what I want to focus on. Okay, so but let's do the first part as well. We have this diagram that shows a regular pentagon. Okay, regular का मतलब क्या होता है? All sides and all angles are equal. All sides and all angles are equal. So if one side is 6, that means all sides are 6. ये सारी side 6 है, ठीक है। अच्छा, all the angles are also equal. और ये angles आप कैसे find कर सकते हैं? Regular pentagon के angles कैसे निकालेंगे? Remember the sum of angles. Sum of angles का क्या formula होता था आपके पास? Sum of angles का formula आपके पास होता है n-2 multiplied by 180 degrees. Sum का ये formula होता है। रेगुलर पेंटागन है तो आप अगर आप रेगुलर फिगर जो होती है उसमें आपको एक सिंगल एंगल निकालना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको n से डिवाइड कर देते हैं। तो आपको कोई भी एंगल निकालना है, लेट्स से हमें ये वाला एंगल चाहिए पूरा, कोई एक एंगल। सो लेट्स से हम ये ऊपर वाला एंगल, इसको हम थीटा कह लेते हैं। तो ये थीटा हमारे पास कैसे आ सकता है? जो हर एंगल है पेंटागन का, इस फॉर्मूला को यूज करके आ सकता है। n की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए? 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज। ये हमें क्या देगा? सम देगा सारे एंगल्स का टोटल। और फिर 5 साइड्स हैं तो हमें एक एंगल चाहिए, तो इस पूरी फिगर को हम 5 से, पूरे नंबर को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक सिंगल एंगल मिल जाएगा उसका। Let's see what that turns out to be. 3 into 180 divided by 5 and that is giving me 108 degrees. तो इस पेंटागन का जो एक एंगल है that is 108 degrees. तो ये जो थीटा था ये हमने फिगर आउट कर लिया, दिस इज 108 डिग्रीज। हमें करना क्या है? उसने कहा है शो दैट d इज इक्वल टू दिस, करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। d क्या है? d इज द लेंथ ऑफ a from o where o represents the center of the pentagon.
अब ये d कैसे फिगर आउट करें? What we can do here is we can draw a line here like this, because देखिए रेगुलर फिगर्स जो होती है ना वो सिमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, तो O का डिस्टेंस जो A से है वही O का डिस्टेंस B से होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस भी D होना चाहिए. सो दिस इज काइंड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. जितनी भी ट्रायंगल्स यहाँ पे इस तरह से बन रही होंगी इस पेंटागन के अंदर, दे आर ऑल गोइंग टू बी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स. अब हमने अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिए और हमें पता है कि एक साइड इसके 6 है, तो क्या हम D की वैल्यू फिगर आउट कर सकते हैं किसी तरह से? This is where this angle is going to come in handy now. 108 degrees हमें पता है कि ये टोटल एंगल है. ये पूरा एंगल कितना है? 108 डिग्रीज है. जब ये O से लाइन आ रही है A के ऊपर, तो ये क्या करेगी लाइन? ये इस एंगल को हाफ में डिवाइड कर देगी. तो O के जो नीचे वाला पार्ट है, जो इस एंगल का नीचे वाला पार्ट है, दिस, ये कितना आएगा? 108 का हाफ, इसको 2 से डिवाइड कर दें, दैट इज 54 डिग्रीज. सो नाउ वी हैव दिस ट्रायंगल OAB. इस ट्रायंगल में हमें D की वैल्यू फिगर आउट करनी है. ठीक है, वी कैन यूज कोसाइन रूल इफ वी वांट, और वी कैन यूज साइन रूल इन फैक्ट इफ वी वांट एज वेल, बिकॉज अगर ये 54 है तो ये एंगल भी 54 है, और फिर हम थर्ड एंगल तो निकाल सकते हैं. 180 में से 108 माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा 72. इफ यू वांट यू कैन यूज साइन रूल. साइन रूल से भी हो सकता है. यू कैन ऑल्सो डिवाइड दिस ट्राइंगल इनटू 2 पार्ट्स लाइक दिस. एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दें इस तरह से, नीचे वाली ये 3 बन जाएगी. फिर आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके भी कर सकते हैं. यू कैन डू इट एनी वे दैट यू वांट. लेट्स से मैंने ये एंगल्स लिख दिए सारे, तो मैं साइन रूल यूज कर सकता हूँ. 2 पेयर्स यूज कर लें. सो आई कुड से D over D के corresponding angle है 54 degrees है, so I could say D over sine of 54. अब दूसरा ये 6 यूज कर लें, that's the known side. 6 over 72 degrees, sine of 72 degrees, and that is going to give us the value for D. ठीक है, ये evaluate कर लें. 6 multiplied by sine of 54 divided by sine of 72, and that is giving me 5.1039. उसने क्या 2 डेसिमल प्लेसेस तक, उसको 2 डेसिमल प्लेसेस पर राउंड ऑफ करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5.10. ये हमें शो करना था, तो हम इस तरह से इसको शो कर देंगे. दैट्स द फाइनल आंसर दैट वी हैव. ओके, दैट वाज पार्ट ए. लेट्स मूव ऑन. अच्छा, इसमें उसने वो फॉर्मूला बता दिया पिरामिड का. पिरामिड का फॉर्मूला उसने बताया होता है, बाकी कुछ फॉर्मूला उसने नहीं बताया होते. सिलेंडर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. आपको स्फीयर का फॉर्मूला दिया होगा, पिरामिड का दिया होगा, बाकी सारे स्फीयर, पिरामिड और कोन, ये 3 फॉर्मूलाज दिए होते हैं, बाकी सारे आपको याद रखने होते हैं. ठीक है, मेंसुरेशन के बाकी सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे. You can have a look at that checklist video in which I've listed down all the formulas and major concepts that you need to know. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा कहीं पे. Let's have a look at this now. The regular pentagon ABCDE forms the base of a pyramid. Okay, the regular pentagon ABCD. अच्छा, पहले पार्ट में देखें जो ABCD पेंटागन था, उसने कहा वो एक पिरामिड की बेस बन गया. ठीक है, पिरामिड उसकी बेस जो है वो पेंटागन है, वो एक रेगुलर पेंटागन है जो फर्स्ट पार्ट से आ रहा है हमारे पास. ठीक है, the vertex F is vertically above O. जो O सेंटर था पिरामिड का, उसके बिल्कुल ऊपर vertically above is the point F, which is the top of the pyramid. The length of each sloping edge of the pyramid is 14 centimeters. तो sloping edge ये जो एक 14 है, ये सारे 14 है, right? Because वो O से F जो है बिल्कुल O के ऊपर है, सेंटर के ऊपर है, तो ये सारी साइड्स एक तरह से सिमेट्रिकल हैं. They are all equal to each other. ठीक है, सारे लेंथ्स ये 14 है, ये जो slanting heights हैं. अच्छा, it says calculate the volume of the pyramid. Volume of pyramid का क्या फॉर्मूला होता है? The formula that we have for the volume of a pyramid is base area into height divided by 3. उसने ऊपर लिखा है 1/3 into base area into height. तो हमें 2 चीजें चाहिए इसके लिए. एक हमें चाहिए बेस एरिया, और दूसरी चीज हमें चाहिए height of this pyramid. Now, how do you figure these 2 things out? Base area. अब देखें, this is going to be really handy now. जब हमने फर्स्ट पार्ट में सारी कैलकुलेशन की है, OAB हमें ट्राइंगल दिए थे ना उसने यहाँ पे, या OAB ट्राइंगल दी हुई थी, उसमें हमने फिगर आउट कर लिया कि ये एक साइड 60 और हमने बाकी दोनों साइड्स भी निकाल ली है. वो कितनी है? 5.10. इसकी आपको ज्यादा एक्यूरेट नंबर यूज करना चाहिए, 5.10
4 आ रहा था. You can use that if you want. 5.10 भी यूज कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे उसने शो करने के लिए कहा हुआ था, तो वो भी सही होएगा. ये 3 साइड्स आपको पता है इस एक ट्राइंगल की, और आपको एक एंगल भी पता है इधर. इनफैक्ट सारे एंगल्स पता है. दिस एंगल इज 52 डिग्रीज. नो सॉरी, 52 नहीं था, 54 था. 54 डिग्रीज ये एंगल है. इसी तरह बाकी एंगल्स भी आपको पता है. अब देखिए, अगर आप इस एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, पेंटागन जो है, रिमेंबर इट्स अ सिमेट्रिकल पेंटागन, इट्स अ रेगुलर पेंटागन, तो आप इस पेंटागन को 5 ट्राइंगल्स में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. तो अगर आप एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पूरे पेंटागन का एरिया मिल जाएगा, राइट? सो लेट्स डू दैट. Let's find the area of this triangle first of all. Area of the triangle OAB. How can we figure that out? Half into base into height तो नहीं यूज कर सकते, उसके लिए आपको height चाहिए होती है. We can use half AB sin C, right? दो sides और उनके दरमियान वाला एंगल. So 6 यूज कर लें और ये यूज कर लें, उनके दरमियान वाला एंगल यूज कर लें. So we can say half into 6 into 5.104 into sine of the angle that is in the middle, which is 54 degrees. Sine of 54 degrees. इससे क्या आएगा? एक ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा. Let's calculate this. 1/2 into 6 into 5.104 into sine of 54 degrees. And that is giving me 12.3876. So that's 388. That's the area of the triangle OAB. ये ट्राइंगल का एरिया आ गया. What about the area of the pentagon? पूरे पेंटागन के एरिया, पूरी बेस का एरिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? बिकॉज 5 ट्राइंगल्स बन सकती हैं बेस में. Let's multiply this by 5 and see what that gives us. That is giving me 61.94. This is the base area. ये एक हमें चीज चाहिए थी वॉल्यूम फाइंड करने के लिए. ठीक है, ये आ गया. The other thing that we need now is the height of this pyramid. How do you figure out the height now? Now remember, this is a 3D figure. It's a 3-dimensional figure. 3-dimensional figure में OF जो है, that is vertical. OF is vertical. और ये जो पेंटागन है, that is horizontal. तो O के ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे ना, वो 90 डिग्रीज के होंगे. मतलब जो F के साथ एंगल्स बन रहे हैं, ऊपर से जो लाइन आ रही है FO के साथ जो भी एंगल्स बन रहे होंगे वो सारे 90 डिग्रीज के होंगे. तो हम क्या कर सकते हैं? हम कोई ट्राइंगल इस तरह से बना सकते हैं. हम कहते हैं अच्छा, जिसने 14 एक ये वाली लेंथ दी हुई है, तो अगर हम ये यूज कर लें FE and O like this. ये ट्राइंगल अगर हम यूज करें FEO, दिस इज गोइंग टू बी अ राइट एंगल ट्राइंगल. ये आपको डायग्राम पे नहीं लग रहा, लेकिन दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज देखिए OF वर्टिकल है और OE हॉरिजॉन्टल है. तो अगर हम इसको राइट साइड में बनाएं, इसको अगर आप साइड में बना लें इस ट्राइंगल को, इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस. This is what this triangle looks like. Okay, it's a right angle triangle, but this is F and this is O and this is E. Now, what information do you have about this triangle? You know that the hypotenuse of this triangle is 14, and you also know the length OE. OE length क्या होगी? यही length 5.104. Again, remember the symmetry of this figure. ये सारी O से जितने distances हैं, वो सारे equal हैं. OD, OE, OC, OA, OB, ये सारे 5.104 ही distances हैं. तो OE कितना हो जाएगा? 5.104. We know these two lengths. OF निकाल सकते हैं. OF is the height of this figure. It's a right angle triangle. We can use Pythagoras here. We can say OF का square plus 5.104 का square, base square plus perpendicular square, that should equal 14 squared. और यहां से क्या होएगा? हमारे पास OF आ जाएगा, height आ जाएगी इस डायग्राम की, इस पिरामिड की. 14 squared minus 5.104 squared, and then you take square root of that, and that is giving me OF equal to 13.036. ये हमारे पास आ गई height of this pyramid. And now we can apply that volume formula. Volume of pyramid, what is that equal to?
Volume of pyramid is given by 1/3 into base area. Base area कितना है? 61.94. We figured that out earlier. Into the height, which is 13.036. We just evaluate this on our calculator and see what that turns out to be. 61.94 into 13.036 divided by 3. And that is giving me 269.1. So this is 269.1. That is the volume of this pyramid that we were looking for. All right. So this was these were the difficult questions from the November 2022 paper 2 variant 1. ये उसके मुश्किल वाले questions थे. ठीक है. Now we're going to move on to the next paper, which is October November 2022 paper 2 variant 2. इसके कुछ मुश्किल वाले questions देखते हैं. Let's start with question number 4. All right. We have this universal set where we are given that x is an integer between 10 and 40. 10 और 40 के दरम्यान में एक integer है. Right? So there are many integers between 10 and 40. 30 plus 1, 31 integers होंगे इसके दरम्यान में, because 10 और 40 दोनों included है. ठीक है. अच्छा. P is a set that says that x is a multiple of 6. अच्छा, इसमें ना it's often helpful to write down the elements of the set. फिर आगे आसान हो जाता है थोड़ा उसको समझना. Multiples of 6 इस range में क्या हो सकते हैं आपके? 12, 18, 24, 30, 36. इतने ज्यादा नहीं है elements, तो लिखना आसान होएगा. ठीक है. So these are the elements that you have in the set P. Now set Q is that x is a square number. तो 10 और 40 के दरम्यान में square numbers कौन से हो सकते हैं? 10, 9 के बाद next is 16, 25, 36. और 10 से 40 के दरम्यान में हमारे पास और कोई square number नहीं आता. Now in the first part it says write down the elements of the set P union Q. Okay, तो इन दोनों को combine कर देना, इन sets को P और Q को combine कर दें, repetition को खत्म कर दें. Order में लिखना है set को, वैसे जरूरी नहीं है. Order में लिखेंगे तो फायदा ये होएगा कि आपको पता होगा कि आप कुछ मिस नहीं कर रहे हैं. ठीक है. That's helpful for you your own sake कि आप कोई element मिस नहीं कर रहे हैं. So सबसे पहले 12 आ गया, फिर आपके पास 16 आ गया, 18, 24, 25, you have 30 and 36. 36 देखें कॉमन है दोनों के अंदर, लेकिन आपने एक दफा ही लिखना है. This is the set PQ. इसमें set notation लगाना इस केस के अंदर जरूरी नहीं है. अगर उसने elements का पूछा था तो elements तो आपके पास यही आते हैं. You can just write them down like this. All right. So that's your final answer here. In part 2, it says find n of P complement intersection Q. Now, how do we understand this? N का मतलब है number of elements की बात हो रही है. आपने यहाँ पे elements list down नहीं करने. They are asking for the number of elements. कौन से set के अंदर? P complement intersection Q. P complement का मतलब है P के अंदर नहीं होने चाहिए, P से बाहर होने चाहिए. P के बाहर होना चाहिए. Intersection Q, Q के अंदर होने चाहिए. And intersection का मतलब है and P के बाहर, Q के अंदर. अच्छा, Q में कौन से elements हैं जो P में नहीं है essentially, right? So Q में आपके पास 16, 25, 36 है, लेकिन 36 तो P में भी आ रहा है, तो आपको 36 को exclude करना है. आपके पास बाकी कौन से elements बचते हैं? 16 and 25. आपने 16 और 25 नहीं लिखना है यहाँ पे, आपने बताना है कि ये कितने elements हैं. There are 2 elements. You'll write 2 here. Okay, that's your final answer here. यहाँ पे आप 2 लिखेंगे. अच्छा, now it says use set notation to describe this shaded region in the Venn diagram. अच्छा, इसमें it often helps to think of it in words first of all कि अच्छा आप इसको कैसे describe करोगे इस region को words में. ये क्या shaded region है? एक तो आपको नजर आ रहा है B से बाहर है, ये B से बाहर है. It's outside B. So that basically tells you B complement. B से बाहर है. ठीक है. अच्छा, फिर C के भी अंदर है और D के भी अंदर है. उनमें से कोई भी हो सकता है. C के अंदर या फिर D के अंदर. राइट, C के अंदर भी हो सकता है या D के अंदर हो सकता है. ओके,
तो एक तो कंडीशन ये होनी चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट बी से बाहर होने चाहिए, एंड देयर इज अनदर कंडीशन, द अदर कंडीशन इज डी या सी के अंदर होने चाहिए, बिकॉज बी के बाहर तो ये वाला एरिया भी है, वो तो नहीं आ रहा वहां पे। सी या डी में से किसी एक के अंदर होना जरूरी है। हाउ डू यू राइट दैट इन सेट नोटेशन कि या सी में हो जाए या डी में हो जाए या दोनों में हो जाए, दैट इज सी यूनियन डी। ओके, एंड का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन। तो आप इसको प्रॉपर्ली ब्रैकेट्स के साथ लिखोगे, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। ऑलराइट, सी यूनियन डी इकट्ठा है और उसका इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। That is what you're going to write here. You'll say this is B complement intersection C union D. All right, and that's your final result here. इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ये पहले लिखते हैं, B complement बाद में लिखते हैं. That doesn't make any difference. That will also be correct. Okay, अच्छा, let's move on. In part C, it says, in a college, students can study French, Spanish, and Arabic. A group of 25 students are asked which languages they study. Some of the results are shown in the Venn diagram. Okay, French, Spanish, and Arabic, 25 total students हैं. और उसने डायग्राम पे कुछ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की हुई है यहाँ पे. It says all students who study both Arabic and Spanish, they also study French. अच्छा, now let's try to understand the statement. All students who study both Arabic and Spanish. Both Arabic and Spanish. ये जो रीजन है, इसमें जितने भी लोग हैं, दे ऑल्सो स्टडी फ्रेंच. इसका मतलब ये है, ये जो रीजन यहाँ पे जिसमें कोई नंबर नहीं रखा हुआ, इसमें क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अ जीरो हियर, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो भी अरबिक और स्पेनिश पढ़ता है वो साथ फ्रेंच भी पढ़ता है, तो वो इस रीजन में कोई नहीं आ सकता. अच्छा, उसके बाद उसने कहा 7 स्टूडेंट स्टडी फ्रेंच ओनली. That's this region here, right? French only. किसी को कोई और कॉमन नहीं है. 8 students study Arabic. Only नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे. Only नहीं लिखा हुआ, यानी Arabic का जो टोटल होएगा, that is going to be 8. Arabic वाला ये जो पूरा सर्कल है, इसका टोटल कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए. अब देखें, 4 आ गया ये, 1 आ गया ये, 0 आ गया ये, तो बाकी कितना बचा? 8 minus 4 minus 1 minus 0, that is 3. So this region is going to have 3 here. Okay. उसने कहा यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द वेन डायग्राम. हमने कुछ तो कंप्लीट कर दी. देयर इज वन रीजन दैट इज लेफ्ट, बाकी सारे रीजन्स में हमने नंबर्स लिख दिए. व्हाट अबाउट दिस रिमेनिंग रीजन? नाउ वी नो दैट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 25. 25 में से ये सारे नंबर्स माइनस कर दें, जो बाकी रिमेनिंग होएगा वो आपके पास इस एम्प्टी स्पेस में आ जाएगा. वो हम देखते हैं क्या आएगा. 25 minus 7 minus 4 minus 1 minus 5 minus 3 minus 2, and that's giving me 3. तो ये जो remaining number आपके पास यहाँ पे है, this should be 3. ये आपने Venn diagram यहाँ पे complete कर दी. ठीक है, अच्छा, let's move on. Now it says 2 of the 25 students are selected at random. 2 students are selected at random. Okay, find the probability that they both study Spanish only. Spanish only. Remember this rule for probability. जब भी उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये चीज अगर आप मल्टीपल टाइम्स कुछ कर रहे हो, विदाउट रिप्लेसमेंट है या विद रिप्लेसमेंट है, दैट्स ऑलवेज विदाउट रिप्लेसमेंट. 2 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये नहीं हो रहा कि आप एक को सेलेक्ट करके उसको वापस डाल रहे हो और फिर दोबारा से सेलेक्ट कर रहे हो. दैट्स नॉट व्हाट इज हैपनिंग. ओके, एक को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा सेलेक्ट कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट. सो what is this going to be then? Spanish only. Spanish only वाले कौन से लोग हैं? This number here, 5. Okay, this is what that we're talking about. Out of how many? 25. तो first student आपने select किया, उसकी क्या probability है कि वो Spanish only हो? 5/25. जब एक select कर लिया, second person का उसी category में से होने की क्या probability होगी? 5 में से एक आपने select कर लिया, you have 4 left, and then total number is 24 after the first. After you've chosen the first person already, तो ये आपको रिजल्ट देगा 5/25 into 4/24. You can see what that turns out to be. That's giving me 1/30.
ठीक है, so this is 1/30. That's what you get in this part. Now it says 3 of the students are selected at random from those who study French. Okay, now this is very important. 3 are selected not from the 25 students. 3 are selected from those who study French. इसका मतलब ये है, ये जो फ्रेंच वाला सर्कल है, फ्रेंच वाला सर्कल, इस सर्कल में से किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं. आपका जो डिनोमिनेटर है, दैट्स नो लॉन्गर 25. द डिनोमिनेटर इज नॉट 25 एनीमोर. डिनोमिनेटर होगा इन सारे नंबर्स का सम. 7 + 3 that's 10. 10 + 4 + 1 that's 15. डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या होएगा? 15. टोटल लोग जो फ्रेंच पढ़ते हैं, दे आर 15 इन टोटल. उनमें से 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं. Okay, we need to find the probability that only one of them also studies Arabic. We have to find the probability that only one of them also studies Arabic. How do we figure this out now? 3 students को choose किया है. इन 15 में से अरबिक उसमें से कितने हैं? ये भी हो सकता है. और स्पेनिश की कोई कंडीशन नहीं है. अच्छा, now we could think of it mentally, but it's going to be much easier if we were to think of this by drawing a tree diagram. That's really going to make things much simpler. 3 स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं हम. ठीक है, 3 स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं. किन में से? जो फ्रेंच पढ़ते हैं. ठीक है, अब फर्स्ट में आप देखें, प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड करनी है कि वो अरबिक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते. कि ओनली वन शुड स्टडी अरबिक, राइट? तो हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट सेलेक्ट किया उन 15 में से जो ऑलरेडी फ्रेंच तो पढ़ते हैं सारे. तो फ्रेंच वाली कंडीशन नहीं है, फ्रेंच वाले सर्कल के अंदर है. तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं. उन 15 में से हम यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन लिख लेते हैं यहाँ पे. दैट्स गोइंग टू मेक थिंग्स सिंपलर. एक है फ्रेंच ओनली. ये कितने लोग हैं? 7. ओके, या फिर हम ये कर लेते हैं, इसको कैटेगरी ज्यादा नहीं बनाते, हम एक कैटेगरी ये बनाते हैं, फ्रेंच एंड नॉट अरबिक. फ्रेंच पढ़ते हैं लेकिन अरबिक नहीं पढ़ते. ये कितने लोग हैं? क्योंकि अरबिक पे कंडीशन है ना, स्पेनिश पे कंडीशन नहीं है. अरबिक के बाहर कितने लोग हैं यहाँ पे? 7 + 3 10 लोग हैं यहाँ. ठीक है, ये 10 लोग हैं. और उन 15 में से कौन से वो हैं जो फ्रेंच के साथ अरबिक भी पढ़ते हैं? वो हैं 4 + 1, ये वाले 5 लोग. ठीक है, उस ग्रीन वाले सर्कल के अंदर देखें, 4 + 1, ये अरबिक वाले सर्कल के अंदर ये 5 लोग आ रहे हैं. So we have the second category that has these 5 people. तो अब उन 15 में से हमारे पास ये 2 कैटेगरी एक तरह से आ गई, जो अरबिक नहीं पढ़ते, अरबिक पढ़ते हैं. एक हमने लिख दिया ए, एक हमने लिख दिया A' और एक हमने लिख दिया A. लेट्स से ये फर्स्ट स्टूडेंट के लिए है. फिर इसी तरह से सेकंड चूज किया, वो या तो अरबिक पढ़ता है साथ में, नहीं पढ़ता. और इसी तरह से ये. और फिर हमने एक थर्ड चूज किया, उसमें भी वही 2 केसेस बन गए. This is what our tree diagram is going to look like. अब देखिए, फर्स्ट टाइम जब आपने चूज किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन 15 में से जो आपने फर्स्ट चूज किया बंदा, वो अरबिक नहीं पढ़ता? 10 out of 15. So this number is 10 out of 15. और अरबिक पढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5 out of 15. जब एक आपने चूज कर लिया वो बंदा जो अरबिक नहीं पढ़ता, उसके बाद उसी में से एक और सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 10 में से एक बंदा कम हो चुका होगा ना, 9 रह गया होगा. So 9/14. तो दूसरा क्या हो जाएगा? 5/14. अगर आपने फर्स्ट टाइम वो सेलेक्ट किया था जो अरबिक पढ़ता है, तो नहीं अरबिक पढ़ने वाले तो अभी भी 10 है. तो दैट्स 10/14. और दूसरा नंबर एक कम हो चुका होगा बिकॉज एक आपने चूज कर लिया. सो that's going to be 4/14. And similarly, you can complete the rest of the tree diagram here as well. आपके पास थर्ड
पर्सन के लिए फिर क्या होगा आपके पास केस होगा, दो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया जो अरबिक नहीं पढ़ते, तो थर्ड टाइम क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 8/13। दूसरा पर क्या हो जाएगा, 5/13। फिर आपने फर्स्ट टाइम चूज किया था वो जो नहीं अरबिक पढ़ता, फिर आपने चूज किया जो अरबिक पढ़ता है, दोनों एक एक चूज कर लिया मैं। तो अब कितने नंबर रह गए आपके पास, 10 में से 9 रह गए नॉन अरबिक, दैट्स 9/13, और 5 में से 4 ये रह गया, दैट्स 4/13। And using similar logic, you can fill out the rest of the tree diagram as well. आपने यहाँ पे भी एक एक चूज किया हुआ है, so this one will be the same as well, 9/13 and 4/13। अब लास्ट केस में आपने ऑलरेडी दो ए वाले चूज किए हुए हैं, so वो 3 रह गए हैं, 3/13 and 10/13। आपने अगर ये ट्री डायग्राम सही तरह से सोच के बना लिया ना एक दफा, the rest is pretty straightforward after that, because अब उसने क्या कहा है, find the probability that only one of them also studies Arabic। एक बंदा अरबिक पढ़ना चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पहला वाला नहीं पढ़ता अरबिक, दूसरा भी नहीं पढ़ता, तीसरा पढ़ता है, दिस इज वन पॉसिबल केस। ठीक है, एक और पॉसिबल केस क्या हो सकता है, पहला नहीं पढ़ता, दूसरा पढ़ता है और तीसरा नहीं पढ़ता, दिस इज अनदर पॉसिबल केस। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, ऊपर वाले में तो यही दो केसेस बनते हैं आपके पास, राइट, अरबिक वाला, एक अरबिक वाला ये हो गया, और फिर आपके पास ये दूसरा अरबिक वाला हो गया। या अब नीचे वाले केस में क्या हो सकता है, पहला पढ़ता है, दूसरा नहीं पढ़ता, और तीसरा भी नहीं पढ़ता। दीज आर द थ्री केसेस दैट यू हैव फ्रॉम दिस ट्री डायग्राम। आपने सिर्फ इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, उनको ऐड कर लेना, बिकॉज दीज आर द थ्री केसेस दैट यू हैव नाउ। फर्स्ट वाला केस में क्या होता है, 10/15 into 9/14 into 5/13। ठीक है, the second case that is 10/15 into 5/14 into 9/13, and then the third case is 5/15 into 10/14 into 9/13। Evaluate these three numbers and see what that turns out to be. First of all, our denominator क्या आएगा, 15 into 14 into 13। डिनोमिनेटर सबके अंदर हमारे पास आ रहा होगा 2730। न्यूमरेटर्स देख लेते हैं, न्यूमरेटर में हमारे पास इधर होगा 10 into 9 into 5, that is giving me 450 for the first case। Second case में 10 into 5 into 9, that's 450 as well। और third case में 5 into 10 into 9, that is also the same actually, that's also 450। We add all of them up, so that means इसका थोड़ा सा एक सिंपल तरीका भी हो सकता था, but उससे भी eventually यही आपके पास आता, 450 divided by 2730 multiplied by 3, and that is giving me 45/91। Let me just check this again. Yeah, 45/91। ये आ रहा है हमारे पास 45/91, so that's your final answer। Okay, so this is the result that we get from this, and that's our final answer। This was pretty complicated, quite complicated, लेकिन एक तो हमने ट्री डायग्राम सही तरह से बना लिया, इसका सोच लिया, then it becomes pretty straightforward। एक और तरीका इसका ये हो सकता था कि आप ये देख लेते हैं कि अच्छा, एक आपको चाहिए जो अरबिक पढ़ता है, एक आपका होता है जो अरबिक नहीं पढ़ता, तीसरा भी आपको होना चाहिए जो अरबिक नहीं पढ़ता। ठीक है, तो उससे आपके पास ये आ जाता 450/2730, एक केस आपका निकल आता। फिर आप कहते हैं कि अच्छा, ये तीन पॉसिबल केसेस के बन सकते हैं कि इसकी तीन अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, राइट, कि जो अरबिक पढ़ने वाला है, या तो वो पहला बंदा सेलेक्ट हुआ होता, या वो दूसरा सेलेक्ट हुआ होता, या वो तीसरा सेलेक्ट हुआ होता।
तो तीनों के यही सेम प्रोबेबिलिटीज बनती, तो आप एक तरह से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, and that would have given you 45 or 91 as well. That could have been another way of thinking about this, but that requires some a bit more advanced logic. You might do that in A levels later. Okay, Mustafa, that was not really funny. Try again. But okay, so that was part 3. Let's move on to the next one. That was question number 4. Okay, question number 5 देखते हैं. Achha, question number 5. Let's have a look at this now. A bag contains X 5-cent coins and Y 10-cent coins. There's a total of 130 coins in the bag. Write down an equation in terms of X and Y for the total number of coins in the bag. Okay, so we have X 5-cent coins, right? And we have Y 10-cent coins. X coins एक तरह के, Y coins दूसरे तरह के. Total number of coins कितना है? 130. So what's the equation that we can write here? We can just say this is X plus Y. We can actually just write that down here directly. X plus Y, right? X एक तरह के coins है, Y दूसरे तरह के coins है. X plus Y should be equal to this given number. जो उन्होंने क्या कहा है? 130. That's the equation that we get here. Remember, and here it doesn't matter if 5 cent का कौन सा है, 10 cent का कौन सा है. That's irrelevant. उसने सिर्फ number of coins की बात की है. X coins एक तरह के, Y coins दूसरी तरह के. The total number of coins 130, and so that means X plus Y equals 130. Okay. Now it says the total value of the coins in the bag is $8.15. Write down an equation in terms of X and Y for the total value of the coins in the bag. Now, how do we think about this? अच्छा, पहली चीज देखें, यूनिट्स का ध्यान रखना है. ऊपर उसने सेंट्स में दिया है, राइट? और यहाँ पे डॉलर्स दिया हुआ है, तो इसको अगर हम सेंट्स में कन्वर्ट कर लें, सेम यूनिट होना चाहिए, राइट? तो अगर इसको हम सेंट में कर लें, ऊपर वाले को डॉलर्स में कर लें, इसी बात है. सेंट्स में करना आसान होगा यहाँ पे. तो $8.15 multiplied by 100, that gives us 815 cents. तो टोटल वैल्यू जो है उन सारे कॉइन्स की, दैट इज 815 cents. अच्छा देखें, अगर X 5 cent coins है, हर कॉइन की वैल्यू कितनी है? 5 cents. और अगर X है उस तरह के, तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 times X. 5 cent coins की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी? 5x. So we can say 5x plus the value of the 10 cent coins. हर कॉइन की कितनी वैल्यू है? 10 cents. कितने कॉइन्स है? Y. So that's 10y. So 5x plus 10y, that should equal what? 815. So that's another equation that we get from this. ठीक है, ये दो equations हमारे पास आ गई, और ये हम यहाँ पे लिख देते हैं. 5x plus 10y, that should equal 815. That's the second part here. Now the next part says solve the two simultaneous equations to find the number of each type of coin in the bag. Show your working. ओके, एक्स और वाई की वैल्यूज फिगर आउट करनी है, हमने वर्किंग शो करनी है, ये आप इवैल्यूएट कर लें. कैलकुलेटर से नहीं कर सकते डायरेक्टली, यू हैव टू शो योर वर्किंग हियर. कीप दैट इन माइंड. कैलकुलेटर से आप वेरीफाई कर सकते हैं इफ यू वांट. सेकंड इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो x plus 2y equals 815 divided by 5. That's giving me 163. Now I can solve these two equations. First में से अगर हम x को सब्जेक्ट बना लें, let's say that gives us 130 minus 5. Put that in the other equation. And that gives us 130 minus y plus 2y equals 163. And that gives us y equals 163 minus 30. That will be 33. Put that in the other equation. X equals 130 minus 33. And that turns out to be 97. So x की value क्या आ रही है? 97. X क्या represent कर रहा था? X was representing 5 cent coins. The 5 cent coins कितने हुए? 97. You write 97 here, and the 10 cent coins therefore are going to be 33. Total coins देखें कितने बन रहे हैं? 130 coins आपके पास total यहाँ पे बन रहे हैं. ठीक है, अच्छा, let's move on. A machine makes 5 cent coins. It makes 720 coins per minute. The machine operates for 24 hours per day. Calculate the total value in dollars of the coins made by the machine in 300 days.
Give your answer in standard form, correct to 3 significant figures. Okay, now let's break this down. That's a lot of information contained in in just 5 lines. So it's making 5 cent coins. 5 cent coins की बात हो रही है सर. 720 coins बन रहे हैं per minute. And the machine operates for 24 hours per day. Okay, so it does not stop working. It operates for 24 hours. Ayat, that's not true. He's just joking probably. Yeah, that should be okay. Acha. Calculate the total value in dollars of the coins made by the machine in 300 days. Give your answer in standard form. Correct to 3 significant figures. अच्छा 300 days में जो total value बनती है coins made की वो आपने figure out करनी है. अच्छा, now how do we think about this? 720 coins per minute बन रहे हैं और 300 days पे जा रहे हैं. 300 days को अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहें, देखें 24 आवर्स पे चल रहे हैं ना, तो इसमें कोई डेली करने की जरूरत नहीं है. आप पूरे निकाल लें कि 300 डेज को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लें किसी तरह से, और फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है पर मिनट कितने कॉइन्स बनते हैं, तो फिर हम वो नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल सकते हैं, उससे टोटल कितने बने, राइट? तो सबसे पहले देखते हैं 300 डेज को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. 300 डेज में हर डे में कितने आवर्स होते हैं, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 24 से मल्टीप्लाई किए, ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया. आवर्स को मिनट्स में करना है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस द टोटल मिनट्स इन 300 days. लेट्स डू दैट. 324 into 60, that gives me 432,000 minutes. ये आपके पास है. 300 days में इतने मिनट्स होंगे, ठीक है? तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने बने फिर आपके टोटल, हर मिनट में कितने कॉइन्स बन रहे हैं, 720. तो इतने मिनट्स में कितने कॉइन्स बनेंगे, 720 मल्टीप्लाइड बाय 432,000. Let's see what that gives us. इसको 720 से मल्टीप्लाई कर दें, that's giving me 31104110000, 4 zeros after that. इतने आपके कॉइन्स बन रहे हैं. अब उसने कहा है वैल्यू निकालनी है डॉलर्स में. अब ये हर कॉइन कितनी अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉलर वैल्यू देखते हैं. हर कॉइन कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, इतने कॉइन्स हैं 311040000. एवरी कॉइन रिप्रेजेंट्स 5 cents. वी कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 5, लेकिन आपको डॉलर्स में चाहिए. अब ये सेंट्स में आएगा, तो उसको डॉलर्स में करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, राइट? आप कह सकते हैं 5 cent मीन $0.05, तो आप 0.05 से मल्टीप्लाई कर दें, एंड दैट शुड गिव यू योर रिजल्ट. ठीक है, सो लेट मी डू दैट. मल्टीप्लाइड बाय 0.05 एंड दैट्स गिविंग मी 1555200. बट दैट्स नॉट योर फाइनल रिजल्ट. उसने कहा है आपने अपना आंसर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर. यू कांट लीव इट लाइक दिस, यू हैव टू राइट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म नाउ. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और 3 significant figures तक लिखना है. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. 3 significant figures in standard form. सो डेसिमल पे यहाँ पे लगेगा 1.5, और फिर थर्ड डेसिमल प्लेस सेकंड डेसिमल प्लेस आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा. 5 के बाद 52 आ रहा है, सो ये राउंड ऑफ होके 56 बन जाएगा. और कितने 10 की पावर क्या होगी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7. We have 10 raised to power 7 here. Our final answer is going to be 1.56 into 10 raised to power 7 in standard form. Okay. Part C. Let's have a look at this now. The diagram of the diameter of a 5 cent coin is to 21.2 millimeters. So okay, so they're not leaving coins. Coins can be cheaper again. The diameter of a 5 cent coin is 21.2 millimeters now. First of all, that does not make any difference. आप पूरा upon 100 कर दें, that's the same as well, right? तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता. आप डिवाइड करें ना 100 से, तो आप पूरे को 100 से कर दें, आप सिर्फ 5 को कर दें, it does not make any difference. That's also correct. वो भी कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा.
Okay, so the diameter of a 5-cent coin is 21.2 millimeters, correct to the nearest 0.1 millimeters. Diameter of a 10-cent coin is 17.9 millimeters, correct to the nearest 0.1 millimeters. अच्छा, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे जस्ट बिकॉज ये आपने एंड पे उसने कहा अपर बाउंड निकालनी है, तो इनकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड हम लिख लेते हैं। नियरेस्ट मिलीमीटर पे निकाला हुआ ना उसने सब कुछ, तो 21.2 नियरेस्ट 0.1 मिलीमीटर, सॉरी। तो आपने क्या करना होगा, प्लस माइनस 0.1 का हाफ। 0.1 का हाफ क्या होगा, 0.05। तो ये 21.2 असल में क्या होएगा, 21.15 और 21.25 के दरम्यान में, ये असल नंबर इनके दरम्यान में है। इस तरह 17.9 जो है ये कहाँ पर होएगा, ये हम एक्चुअली साइड पे लिख लेते हैं। पहला वाला नंबर है 21.15 से लेकर 21.25 तक। इसी तरह प्लस माइनस 0.05 सेकंड वाले नंबर में भी करेंगे। ये असल में नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 17.85 से लेकर 17.95 तक। ओके, अच्छा, नाउ मार्लन मेक्स a line of 10 5-cent coins and a line of 10 10-cent coins. Calculate the upper bound of the difference between the lengths of the two lines. Okay. Upper bound of the difference between the lengths of the two lines. So देखें उसने 10 5-cent coins रखे हैं और 10 10-cent coins रखे हैं। 10-cent coins and 5-cent coins. अच्छा देखें, 10 रखे हैं दोनों के। अब 10-cent coins में देखें, इस तरह से आपके पास ये 10 coins इस तरह पड़े होंगे। एक कॉइन का डायमीटर कितना है, एक कॉइन का डायमीटर 10 सेंट वाले का, ये हमने उसने दिया हुआ है। 5 सेंट वाले के ऊपर दिया हुआ है और 10 सेंट, अच्छा 10 सेंट वाला छोटा है और 5 सेंट वाला बड़ा है कॉइन। ओके, सो कीप दैट इन माइंड एज वेल। 10 सेंट वाला ये है। हमें इवेंचुअली क्या करना है, अपर बाउंड ऑफ द डिफरेंस निकालना है। अपर बाउंड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द टू लाइंस। अच्छा देखें किसकी लेंथ ज्यादा होएगी। 5 सेंट वाले कॉइन्स का डायमीटर बड़ा है ना, तो 5 वाले की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए और 10 वाले की लेंथ जो है वो कम होनी चाहिए, टोटल लेंथ। ठीक है, तो हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस की अपर बाउंड निकालनी है। डिफरेंस की अपर बाउंड निकालनी है। अच्छा देखें, अगर तो हम बाउंड्स को कंसिडर ना कर रहे होते, उसमें हम क्या करते, अगर हम डायरेक्टली करना चाहते तो 5 सेंट वाला का वाले की आप देखें डिस्टेंसेस क्या बनते हैं यहाँ पे। 5 सेंट वाले के आपके पास बनते हैं 21.2 हर कॉइन का, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल वुड बी 21.2 इंटू 10। और 10 सेंट वाले का कितना बनता, 17.9 इंटू 10। तो अगर आपने डिफरेंस निकालना होता डायरेक्टली, अगर आपको डिफरेंस निकालना होता वो क्या होता, 21.2 इंटू 10 माइनस हम उसमें से करते हैं 17.9 इंटू 10। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इसकी अपर बाउंड चाहिए। हमें क्या चाहिए, इसकी डिफरेंस की अपर बाउंड। अब एक नंबर में से हम दूसरा नंबर माइनस कर रहे हैं और हमें इस नंबर को मैक्सिमाइज करना है। इसका मतलब क्या है, जो पहला नंबर है, जो पॉजिटिव नंबर है, ये मैक्सिमम होना चाहिए और जो माइनस हो रहा है ये नंबर मिनिमम होना चाहिए, राइट। जो बड़ा नंबर है उसकी अपर बाउंड लेंगे, जो छोटा नंबर जो माइनस कर रहे हैं उसकी लोअर बाउंड लेंगे, फिर आपके पास डिफरेंस मैक्सिमाइज होएगा। तो देखिए 21.2 वाला जो नंबर था उसकी अपर बाउंड क्या थी, 21.25। तो वहां से ऊपर से हम वो वाला नंबर यूज करेंगे 21.25 वाला। ठीक है, क्योंकि हमें डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है, राइट। और दूसरे कॉइन का हम क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर लेंगे, तो जाके जो नंबर हम माइनस कर रहे हैं वो छोटा हो और डिफरेंस हमारे पास बड़ा आ जाए इवेंचुअली। सो दिस शुड बी 17.85 इंटू 10। 10 से मल्टीप्लाई क्यों करें, बिकॉज 10 कॉइन्स हैं आपके पास, तो लेंथ को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। दिस इज गोइंग टू गिव यू द फाइनल रिजल्ट। ओके, ये आप कर सकते हैं 21.25 minus 17.85 multiplied by 10 and that is giving me 34।
That's the upper bound of the difference in millimeters. Units का मसला तो नहीं है, सारे millimeters हैं या सारे millimeters हैं. That's what we get from this. Okay, so that was slightly tricky, but not too much. That's what we get here. Let's move on. Question number 6. The next one that I want to do from this paper is question number 6. Let's have a look at this. We have these two diagrams. The first part is pretty straightforward. इसने कहा reflect करना है triangle A को in the line x equals 1. X equals 1 ये कौन सी line होगी? This is a vertical line. X equals something. X equals a constant. That's a vertical line, right? 1 के ऊपर आपके पास इस तरह से ये वर्टिकल लाइन आ रही होगी. इसमें आपने क्या करना है? रिफ्लेक्ट करना है ट्राइंगल ए को और उस इमेज को बी लेबल कर देना है. अब डिस्टेंसेस का ख्याल रखना है. वाई एक्सिस में नहीं रिफ्लेक्ट कर देना. इट्स अ कॉमन एरर दैट पीपल एंड अप डूइंग हियर बिकॉज वो जल्दी में कर रहे होते हैं तो गलती से वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करना शुरू हो जाते हैं. डिस्टेंस आपने x इक्वल्स 1 वाली लाइन से देखना है. तो इस पॉइंट का 3 यूनिट्स डिस्टेंस है, उतने 3 यूनिट्स राइट पे चले जाएं और फिर दूसरा पॉइंट जो है इसका 4 यूनिट्स हो जाएगा और इसी तरह ऊपर वाले पॉइंट का भी 4 यूनिट्स डिस्टेंस है, 4 यूनिट्स राइट पे चले जाएंगे. द डायग्राम इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, इसको आप रूलर से बना देंगे. दैट्स बेटर. इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस. ठीक है, इस तरह की आपकी डायग्राम बन जाएगी. आप इसको लेबल कर देंगे. विल से दिस इज द ट्रायंगल बी. Okay, that's the first part. Pretty straightforward. ये आपको first part में करना था. अच्छा, ये आपकी diagram B बन गई. Now the second part is a 5-mark question. That's very rare in transformations. Let's think about this. It says triangle A is mapped onto triangle D by a combination of two transformations. दो transformations हो रही हैं जिससे जो A triangle है ना वो triangle D पे चला जाती है. Okay. Now triangle A is first mapped onto triangle C. So there's some triangle C. इस पे पहले करते हैं और उस ट्रांसफॉर्मेशन को उसने नाम दिया है ट्रांसफॉर्मेशन Y. पहले ये होती है और फिर जो ट्राइंगल C बनती है पहली ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसको ट्रांसलेट करते हैं 6 1 से तो वो D पे चला जाती है. हमें क्या करना है? Y को डिस्क्राइब करना है. We have to describe the transformation Y somehow. How do we do that? How do we describe the transformation Y? अब उसने देखे सेकेंड वाली ट्रांसफॉर्मेशन दी आपको, पहली वाली नहीं दिया. तो हमें क्या करना है? पहले तो हम किस तरह से ये फिगर आउट करते हैं ट्राइंगल C क्या है, राइट? ट्राइंगल C हमें मिल जाएगी तो फिर हम वो ट्रांसफॉर्मेशन फिगर आउट कर सकते हैं. उसके लिए वी कैन गो बैकवर्ड, राइट? C से D पे जा रहे हैं ना, उसके लिए क्या कर रहे हैं? 6 1 ट्रांसलेशन कर रहे हैं. तो अगर हमें D से C पे जाना होता, हमें D पता है, हमें वापस C पे जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस ट्रांसलेशन का इनवर्स कर लेते हैं. ये क्या हो जाएगा? -6 -1. तो D से वापस C पे जाने के लिए हम करते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन बाय -6 -1. उससे हमें ट्राइंगल C मिल जाएगी. Let's do that. Let's take any one point on this triangle. -6 units left. 1 2 3 4 5 6 and 1 unit down. ये यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट. यहाँ पे आप वही वाली ट्राइंगल बना दें. कितनी ट्राइंगल? 3 यूनिट्स इस तरह से जा रही है और ये ऊपर है आपके पास. This is what that triangle looks like. This is the triangle C. ये आपने सबसे पहले तो ड्रॉ कर ली अपनी डायग्राम के ऊपर to understand the situation better. So now you know what triangle C is. अब उसने कहा है, देखें बैकवर्ड्स आ रहे हैं. D से हमने C फिगर आउट कर लिया. उसने कहा है A was mapped to triangle C by a transformation Y. अब आप सोच सकते हैं कि अच्छा A से C पे हम कैसे जा सकते हैं? ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? ये हमें फिगर आउट करना है. अच्छा, ट्रांसलेशन तो नहीं है, हम सोचते हैं ट्रांसलेशन नहीं है, राइट? वो तो फिगर की शेप डिफरेंट हो गई है. एनलार्जमेंट भी नहीं है, फिगर का साइज चेंज नहीं हो रहा. मसला है रिफ्लेक्शन और रोटेशन का. उन दोनों में से कोई एक चीज है. नाउ हाउ डू यू फिगर दैट आउट? अब इसका एक ये ट्रिक होता है. क्या करें? corresponding points हम देख लें. let's say we have this point here and this point here. जो right angle वाले points हैं ये हमने मार्क कर लिए. अब उसके साथ जो छोटी वाली लेंथ है उसके points हमने मार्क कर लिए कि ये point आ रहा है यहाँ पे और ये दूसरा point आ रहा है यहाँ पे. इनको अगर आप ज्वाइन करें तो क्या होता है? These are not parallel lines. These are not parallel lines. इसका मतलब है ये रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती है. ठीक है, इसका मतलब है ये रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती है.
ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन हो तो पैरेलल लाइंस बनती है, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें, इट ऑलवेज एंड गिव्स यू पैरेलल लाइंस, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये आपने फिगर आउट कर लिया। सो द ओनली पॉसिबिलिटी दैट यू आर लेफ्ट विद इज रोटेशन, ये रोटेशन है, ठीक है, दिस हैज टू बी अ रोटेशन। अब रोटेशन को फिगर आउट करने का एक तो तरीका होता है, कुछ लोग सोच लेते हैं मेंटली एंड दैट्स प्रीटी क्विक, बट इफ यू नॉट वन ऑफ देम, इसका स्टैंडर्ड तरीका वो अप्लाई कर लें। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना लें, corresponding points के कोई भी दो corresponding points लें, so one easy point to choose here would be this one, easy set of points would be these orange points, इनका perpendicular bisector क्या होगा, ये horizontal line, इस line के ऊपर center of rotation होना चाहिए, ठीक है, एक ये हमारे पास perpendicular bisector आ गया, draw one other perpendicular bisector, for example अगर हम इन पॉइंट्स का देखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या आप थोड़ा सा जजमेंट से भी कर सकते हैं, इफ यू डोंट वांट टू यूज अ कंपास, देखें इसका मिड पॉइंट से पास करना चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मिड पॉइंट किधर होगा, ये पॉइंट यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है, दिस पॉइंट हियर, और फिर देखें ये लाइन जो है 1 यूनिट इस तरह से हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, जी मैंने लाइन बनाई है 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है और 5 यूनिट्स वर्टिकल मूव कर रही है, तो जब इसका परपेंडिकुलर बनाएंगे, वो कैसे मूव करेगी, वो 1 यूनिट वर्टिकल मूव करेगी और 5 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, ऐसी आपको लाइन बनानी है दैट passes through this point, and then you can draw this without a compass. So basically 5 horizontally मूव करना चाहिए और 1 vertically, तो ये आपकी लाइन ना कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये आपका दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, and you can see where that is intersecting. These two perpendicular bisectors are intersecting at the origin पे intersect कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, this is your center of rotation. So we have figured out two things now. It's a rotation with center of rotation at origin, right? Or yeah, Mustafa, I can't do that on my iPad. Compass से नहीं कर, arc नहीं बना सकता. So this is another trick that you can use actually without compass. तो इस तरह से आप perpendicular bisector figure out कर सकते हैं. Origin पे ये आपका center of rotation बन रहा है. अब आपको सिर्फ figure out करना है इसका angle क्या है. Angle के लिए या तो आप original figure को देख लें. देखें ये side vertical थी ना, जो आपकी perpendicular था figure का, जो 3 यूनिट्स वाली लेंथ थी वो वर्टिकल थी पहले, बाद में क्या हो गई है, हॉरिजॉन्टल हो गई है, तो इट्स बेसिकली ए से सी पे मैप कर रहे हैं, तो इस तरह से जा रही है फिगर, तो इट्स 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस है कि आप सेंटर ऑफ रोटेशन से देख लें, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कोई भी मार्क कर लें, फिर आप उसको प्रोटेक्टर से मेजर कर लें इफ यू वांट, सो यू कैन फॉर एग्जांपल हैव दीज टू लाइंस and you would know that this is a 90 degrees. ठीक है, लेकिन आप उसको वैसे भी figure out कर सकते हो, it's a 90 degrees rotation, you can write that down here now. Let's describe fully this transformation. So how do you describe this now? You say this is a 90 degrees anti-clockwise. 90 degrees anti-clockwise. This gets you 1 mark. This is the angle along with direction. Rotation, that gets you the 2nd mark. With center of rotation at 0, 0, that gets you the 3rd mark. और फिर 2 marks most likely C फिगर को बनाने के आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपके इंटरमीडिएट स्टेप था उस पे आपको मिल जाएगा, right? Mustafa, that's also fine. 270 degrees clockwise, that's also another way of writing that. That's also correct. वो भी लिख सकते हैं. That would also be fine. Okay. Achha, so 90 degrees anti-clockwise, you could either do it that way, or you could say it's 270 degrees clockwise. If you want to do that, okay, that's okay. You can also do that. That's also correct. Okay. Achha, so that's question number 6. Let's move on. The next one that I want to do from this paper is question number 7. Let's have a look at this. So we have ABCD, which is the floor plan of an exhibition hall with dimensions shown in meters. Diagram pe nazar aa raha hai. Points A, B, C, and D lie on the same horizontal plane. In the first part, it says calculate the angle BCD.
So what's that angle? That's this angle here. BCD angle चाहिए आपको. How do you figure that out? Well, it's quadrilateral. Yeah, it's a quadrilateral. ये angle हमें figure out करना है. क्या कर सकते हैं? Well, one good starting point could be that you join these two points. B और D को आप join कर लें इस तरह से. ठीक है, B और D आपने join कर लिया. अब ये आपके triangles बन गए, right? Yeah, so that's actually pretty quick now because we know this is what's 160, this is 195. नीचे वाली triangle right angle triangle है, तो उसमें हम Pythagoras यूज कर लेते हैं. उससे BD लेंथ आ जाएगी. BD square is equal to 95 squared plus 160 squared. इससे BD लेंथ आ गई. जब BD लेंथ आ जाएगी तो ऊपर वाली ट्रायंगल में हमारे पास तीन साइड्स आ जाएंगी. कोसाइन रूल यूज करके हम एंगल निकाल सकते हैं. लेट्स डू दैट क्विकली. 160 squared plus 95 squared and that gives me 34625. उसका स्क्वायर रूट करते हैं and that is 186.077. we can say that's 08. ये हमारे पास ये तीसरी लेंथ आ गई 186.08. ठीक है, इसके बाद कोसाइन रूल लगाना है. that's not that difficult. आप कर सकते हैं. Let me call this angle theta. Cos theta that should be equal to, remember जो opposite side है वो ये वाली है 186.08. तो बाकी सबको बाकियों को क्या करेंगे? 107 squared plus 165 squared minus 186.08 squared divided by 2 into 107 into 165. I'm using this form of the cosine rule. Cos theta or cos of A equals B squared plus C squared minus A squared divided by 2BC. ओके, ये evaluate कर लें, इसका cos inverse निकाल लें, आपके पास थीटा आ जाएगा 107 squared plus 165 squared minus 186.08 squared divided by 2 and 107 and 165, and that's giving me 0.11465. Cos theta equals this. इसका cos inverse निकाल लें, and that gives me 83.4 degrees. Okay, that should be the answer, 83.4 degrees. All right, so that's the angle that we were looking for, angle BCD. And now it says a light is attached to the ceiling vertically above B. Okay, the angle of elevation of the light from C is 8.2 degrees. Acha, vertically above B, B के ऊपर we have a light. So इधर से कोई vertical line जा रही है, let's say इस तरह से. Now देखें, बाकी सब ये floor plan horizontal है. All of this is horizontal. ठीक है, ये एक vertical line जा रही है और ये ऊपर एक light लगी है. Let's call this highest point L. Angle of elevation of the line from C is 8.2. C से अगर angle measure करते हैं उसका तो 8.2 आता है. आपको क्या करना है? A से angle निकालना है. अच्छा देखें, LB is vertical, तो जो point B है इस पे जो angles बन रहे होंगे ना आपके point B के ऊपर, they are going to be 90 degrees because BL is perpendicular and everything else is horizontal. Point B वाले angles 90 degrees होंगे. That's an important point to consider here. तो एक आप इस तरह से triangle बना लें यहाँ पे to help you think about it कि ये point L है, B is on the ground, और फिर एक point C है, C से जो एंगल बन रहा है उसने कहा है this is 8.2 degrees. ये उसने बताया आपको. Angle of elevation of the light from C, that's 8.2 degrees. Find क्या करना है हमें? Find करने के लिए उसने कहा है find करें angle of elevation of the light. तो again light तो point B के ऊपर है vertically, तो B के ऊपर एंगल 90 degrees बन रहा होगा अभी भी, और अब पॉइंट किधर है? A के ऊपर. ये आपको एंगल निकालना है. लेट्स कॉल दिस थीटा. दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट. नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी हैव हियर? LB हमें नहीं पता, LC BC पता है, दैट्स 107. लेट्स राइट दैट डाउन हियर. ये पता है हमें. इससे हम क्या कर सकते हैं? हमें AB भी पता है, इनफैक्ट AB भी पता है, या AB इज 95. AB यहाँ पे लिख लेते हैं. अब हमें क्या पता है? ऊपर वाले ट्रायंगल में दो चीजें पता है. वी कैन फाइंड द वर्टिकल लेंथ, BL या LB निकाल सकते हैं. कैसे? tan यूज करके. LB is
perpendicular, BC is base. Perpendicular base में कौन सी रेशियो होती है? tan. We can say tan of 8.2 degrees, that is equal to BL divided by 107. यहाँ से BL length आ जाएगी. Let's calculate that. That's 107 multiplied by tan of 8.2 degrees. And that gives me 15.41 meters. In fact, 42 बनेगा या because 418 है तो ये 42 आ गया. अब हमें पता चल गई ये BL की लेंथ, that's 15.42. इसको यूज करके हम सेकंड ट्रायंगल में क्या कर सकते हैं, वो एंगल थीटा निकाल लेते हैं. अगेन tan यूज करेंगे इसके अंदर. tan theta is 15.42 divided by 95. 95 से डिवाइड किया, tan इनवर्स कर लिया. That's giving me the value of this angle, that is 9.22 degrees. So the answer turns out to be 9.22 degrees. This is the angle of elevation of the light from the point A. That's what we were looking for here. Okay, so जब 3D वाले questions आते हैं ना, it often helps to draw right angle triangles like this. उससे आपकी ये चीज काफी आसान हो जाती है. It helps understanding it relatively more easily. Okay, let's do the last question in this paper. That's question number 9. We have this sphere. It says the diagram shows a wooden ball. It is made in the shape of a large hemisphere with a small hemisphere removed from the center. Okay, small hemisphere removed from the center. ये एक बॉल है, ठीक है. ये देखिए दरमियान वाला ये हेमिस्फीयर का टॉप है, ये रिमूव किया हुआ है उसमें से, राइट. ऑफ कोर्स दैट्स हाउ अ बॉल लुक्स लाइक, राइट. ये इस तरह से दरमियान से ये रिमूव कर दिया तो ये बॉल की शेप बन गई है उसकी. The diameter of the large hemisphere is 20 centimeters. Diameter of the hemisphere, that means this, उसने दिया हुआ यहाँ पे नीचे 20 है. And the width of the rim of the ball is 2 centimeters. That means the diameter of the small hemisphere that has been taken out is 16 centimeters, right? The 2 centimeters left पे, 2 centimeters right पे, the total 20 था. The navel part कितना रह गया? 16 centimeters. Show that the total surface area of the ball is 364 pi centimeter square. अच्छा देखा surface area of ball क्या होएगा? Okay, that's actually kind of tricky. एक तो इसका external surface area, बाहर वाला area, large hemisphere का, ये surface area निकालेंगे. फिर अंदर वाला हेमिस्फीयर वो भी तो इसका सरफेस होएगा ना. That's the inner surface, right? That's the inner surface. तो उसका आप निकालेंगे एरिया और फिर उसमें ऐड करेंगे ये जो ऊपर शेडेड पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये उसमें ऐड करना पड़ेगा. ये 3 चीजें करनी है, ठीक है. तो पहले हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया पहले हम करते हैं लार्ज हेमिस्फीयर का निकाल लेते हैं. लार्ज हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया. अच्छा वो क्या आएगा, उसने सरफेस एरिया स्फीयर दिया हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर. हेमिस्फीयर का क्या आएगा सरफेस एरिया? That will be 2 pi r square. Of course, assuming it's a hollow hemisphere. अभी हम दरमियान वाले पार्ट का नहीं देख रहे हैं, सर्कल का नहीं देख रहे हैं, सिर्फ बाहर वाला रीजन, एक्सटर्नल सर्फेस ये वाला देख रहे हैं. सर्कल जो होता है ना हेमिस्फीयर में, वो नहीं कंसिडर कर रहे हैं हम, राइट. तो हम सिर्फ 2 pi r square जो एक्सटर्नल सर्फेस एरिया ना वो निकाल रहे हैं. सो बेसिकली दिस पार्ट साइड वाला उसका हाफ हो जाएगा, राइट. अगर हम सर्कल भी ऐड करते उसमें pi r square ऐड करना पड़ता, बट अभी हम सिर्फ हेमिस्फीयर का बाहर वाला पार्ट देख रहे हैं. तो वो क्या हो जाएगा 2 pi r square. So we can say 2 pi into r. r बड़े वाले का क्या है 20 diameter है, राइट. रेडियस क्या होएगा 10 का स्क्वायर. That gives us 100 into 2, that's 200 pi. अच्छा, what about the small hemisphere? उसका क्या हो जाएगा 2 pi into 8 squared, right? Because अंदर वाले का diameter हमने ऊपर लिखा था 16, radius 8 होएगा. So that's 64 into 2, which is 128. So that's 128 pi. ये अंदर वाले हेमिस्फीयर का एरिया भी हम का सरफेस एरिया भी हमने निकाल लिया, ठीक है. ये 2 चीजें हो गई.
अब हमें देखना है ये जो शेडेड पार्ट है ये उसमें ऐड करना पड़ेगा। ये शेडेड पार्ट कैसे आएगा? बड़े सर्कल में से ये छोटा वाला सर्कल माइनस कर दें, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटा वाला सर्कल के एरिया माइनस कर दें, राइट? आउटर सर्कल है बड़ा सर्कल है, और फिर जो अंदर वाला सर्कल है छोटा सर्कल है, इनके एरियाज को सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट? तो शेडेड एरिया निकाल लें जो आपको डायग्राम पे नजर आ रहे हैं। लार्ज सर्कल माइनस द स्मॉलर सर्कल। लार्ज सर्कल का रेडियस क्या था? 10 पाई इंटू 10 स्क्वायर माइनस द स्मॉलर सर्कल, दैट्स पाई आर स्क्वायर अगेंस्ट, दैट्स पाई इंटू 8 स्क्वायर। 100 पाई माइनस 64 पाई, दैट शुड गिव यू 636 पाई। या तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? इन सार सबको ऐड कर दें, दैट शुड गिव यू द टोटल सरफेस एरिया। ये शो वाला क्वेश्चन है, सारी वर्किंग शो करनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे 200 पाई प्लस 128 पाई प्लस 36 पाई। Let's see what that turns out to be. पाई की टर्म्स में रहने देना, डेसिमल्स में नहीं कन्वर्ट करना। उसने फाइनल आंसर पाई की टर्म्स में आ गया। ओके, 128 इसमें वन करेंगे 134, 134 plus 30, yes, that's correct. That gives us 364 pi, and that's what we wanted to show there. Okay, that's the total surface area here. It says the ball is made from wood. The mass of 1 centimeter cube of the wood is 0.74 grams. Calculate the mass of the ball. Okay, now how do we think about that? Mass is 1 centimeter cube. Centimeter cube किसका? Mass of 1 centimeter cube. 1 centimeter cube किसका यूनिट है? Centimeter cube वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को कॉरेस्पॉन्ड करता है 0.74 ग्राम्स। तो जितना भी वॉल्यूम होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.74 से, तो हम इसका मास मिल जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस ball that we have. How do you find that? Volume of this ball. Okay, so again, what we can do is we can find the volume of the bigger hemisphere. ये पूरा रीजन आ जाएगा हमारे पास उसका, राइट? जिस तरह आपके पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल को हाफ कर दो, तो आधे फुटबॉल का वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास, राइट? फिर उसमें से एक छोटा हेमिस्फीयर आप उसमें से का वॉल्यूम, जो अंदर वाला पार्ट है उसका वॉल्यूम आप माइनस कर दोगे, ये वाला वॉल्यूम वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास इस बॉल का वॉल्यूम आ जाएगा। लेट्स फिगर दैट आउट। Let's figure out the volume of the ball that we have. Okay, yeah. वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले। कैसे आएगा? बड़े हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। अगेन, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फीयर का क्या आएगा इस केस के अंदर? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बस इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अच्छा ये हो गया। ये हम यहाँ पर कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब, radius of the bigger hemisphere. First of all, that was 10, so pi 10 cube minus 2/3 into pi into 8 cube. Let's evaluate this. First of all, ये वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब ही था ऊपर। ये देखते हैं क्या आता है, 10 cube minus 8 cube multiplied by 2 divided by 3. That's giving me 976/3 times pi. डेसिमल्स में लिखना चाहे वो भी सही है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये आपका आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। उसने पूछा मास क्या है उसका। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 0.74 ग्राम। आपके पास कितना वॉल्यूम आ रहा है? 976/3 टाइम्स पाई। तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे उस मास से। सो दैट्स 976 pi/3 मल्टीप्लाइड। देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है ना, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना आएगा, इसको बस उसने 0.74 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको ग्राम्स में मास मिल जाएगा। लेट्स सी व्हाट दैट टर्न्स आउट टू बी। ये मेरे पास आंसर आ रहा था, मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.74, एंड दैट्स गिविंग मी 756.3।
That's the mass of the ball that we're getting. इसको अगर आप round off करके लिखना चाहें 3 significant figures पे, this would be 756, and that's your final answer. Okay, now it says another ball is mathematically similar to the first ball and is made from the same type of wood. The total surface area of the second ball is 546 pi. Calculate the mass of the second ball. Okay, now how do we think about this? Another ball is mathematically similar to the first ball. सेम टाइप ऑफ वर्ड के बने हुए हैं, इसका मतलब है जितना जो वॉल्यूम और मास की रेशियो यहाँ पे उसने दी हुई थी, दैट्स स्टिल वैलिड बिकॉज वो सेम टाइप ऑफ वर्ड के बने हुए हैं, तो सेम डेंसिटी वगैरह होगी उसकी, राइट? तो सेम उसके वही बनता है. अब सेकंड बॉल का सरफेस एरिया उसने बताया हुआ है, दैट इज 546 पाई. अच्छा, फर्स्ट बॉल में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है, उसका सरफेस एरिया कितना था, दैट वाज 364 पाई. और उसका वॉल्यूम कितना निकला था, उसका वॉल्यूम हमारे पास आया था 976 pi over 3. अभी जो सेकेंड स्फीयर है हमारे पास, इसका सरफेस एरिया कितना है, 546 पाई. उसने कहा है ये जो सेकेंड स्फीयर है, दिस इज सिमिलर टू द फर्स्ट स्फीयर. दीज आर सिमिलर फिगर्स. ओके, अब सिमिलर फिगर्स में व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरियाज एंड वॉल्यूम्स, हाउ आर द टू कनेक्टेड? एरियाज और वॉल्यूम्स कैसे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ? ये हमारे पास है V2. ये हमें नहीं पता. अगर हम सेकंड वाले का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम जब हमारे पास आ जाएगा तो मास तो फिर डायरेक्टली आ ही सकता है, बस 0.74 से मल्टीप्लाई करना है उसके बाद. सो द की थिंग इज वी वांट द वॉल्यूम ऑफ दिस सेकंड बॉल. ओके, फिर मास आ जाएगा उससे. नाउ हाउ डू यू फिगर दैट आउट? सिमिलर फिगर्स में रिमेंबर वी हैव दिस रूल कि V1 over V2 is equal to what? L1 over L2 ka whole cube. Remember that? And similarly, we have this other rule, A1 over A2, that is equal to L1 over L2 ka whole squared. Remember that? That's what we know about similar figures. Can we connect volumes and areas here somehow? अगर हम इसमें इस तरह से करें कि अच्छा फर्स्ट वाले में से हम इसको राइट साइड सेम करनी है ना हमें, ताकि हम दोनों को वॉल्यूम और एरिया को कनेक्ट कर सकें. हम फर्स्ट में अगर स्क्वायर कर लें दोनों साइड्स को, V1 over V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. उससे फायदा क्या होएगा, राइट साइड पे हमारे पास जो पावर बन गई वो 6 बन गई, और इसमें नीचे वाले में अगर हम पावर 3 कर दें दोनों साइड्स के ऊपर, उसका क्या फायदा होएगा, राइट साइड पे हमारे पास हो जाएगा, ये 2 था यहाँ पे, तो ये 2 पावर 3 होएगा, तो वो हो जाएगा 6 यहाँ पे. राइट साइड सेम हो गया ना दोनों. इसका मतलब क्या हुआ, जो वॉल्यूम और एरिया में रिलेशनशिप होता है, दैट इज दिस. ये अगर आपको डायरेक्टली याद है वो भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन बेसिकली फिगर दैट आउट फ्रॉम हियर एंड यू कैन से volumes and areas of similar figures are connected like this. V1 over V2 ka whole square, that is equal to A1 over A2 ka whole cube. This is how these are connected for similar figures. Okay, अब याद करना चाहिए, याद करके आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं. थोड़ा सा उल्टा है, वॉल्यूम के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, एरिया के ऊपर क्यूब आ रहा है, राइट? एंड यू अंडरस्टैंड द रीजनिंग फॉर दैट फ्रॉम हियर नाउ. ये क्यों इस तरह से हो रहा है? जस्ट इनपुट वैल्यूज एंड सी व्हाट यू गेट फ्रॉम दैट. ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है. V1 is 976 pi over 3 divided by V2. We don't know what that is. It's pure ka square. On the other side, we have A1, which is 364 pi divided by 546 pi is पूरे का whole square. ये आप कैलकुलेटर में बेशक पूरा evaluate करें, देखें आपके पास वॉल्यूम क्या आ जाता है, और डेसिमल्स पे कर लें उसको, that's okay as well. 364 divided by 546 is पूरे का square. ये करना है हमने evaluate. मेरे पास राइट साइड पे ये आ जाता है, इसका रीअरेंज कर लेंगे थोड़ा सा, तो हमारे पास ये उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा. अच्छा, आई एम डूइंग दिस डायरेक्टली ऑन माय कैलकुलेटर. यू कैन डू दिस सिंपल algebraic manipulation. Hopefully you should be able to do it.
अच्छा मैंने सॉरी स्क्वायर क्यूब की जगह स्क्वायर डाल दिया यहाँ पे. This should have been cube here on the right side. अच्छा let me do that again. 364 divided by 546. इस पूरे का हमने कर दिया क्यूब. 8/27 मेरे पास आ जाता है राइट साइड के ऊपर. Let's do it directly. चले ये राइट साइड पे आता है मेरे पास 976 पाई. ये पाई के टर्म्स में इसको रहने दें अगर तो 976 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर कर देते हैं into पाई और इसका स्क्वायर. Okay, in the numerator here I'm getting 1044616.5 divided by V2 का स्क्वायर. ठीक है, अब ये evaluate कर लें, देखें V2 क्या आता है. Remember enter स्क्वायर रूट लेना है, तो ये होगा ये नंबर into 27 divided by 8 और फिर उसका स्क्वायर रूट लिया. तो मेरे पास जो वॉल्यूम का नंबर आता है ना eventually that is 1877.65 for the second ball. ठीक है, मैंने पाई भी evaluate कर लिया, डेसिमल्स में लिख लिया. तो इसका मास कितना होना चाहिए फिर? इस नंबर को बस मल्टीप्लाई कर दें. ये जो उसने रेशियो दी हुई थी, उसने कहा था 1 सेंटीमीटर क्यूब corresponds to 0.74 grams. तो ये जो भी वॉल्यूम आ रहा है इसको 0.74 से मल्टीप्लाई कर दें and you see what we get from that. That is 1389.5. This is what I am getting from this. ये आपका mass आ जाता है. ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख देना है 1389.5. If you want, you can round it off to 1390. That is 3 significant figures, or you can write it directly like this as well, and that's perfectly okay. That's your final answer that you get here. That's part C here. Pretty complicated, okay, but this is an important relationship now that you might find helpful for future. This is the relation between volumes and areas for similar figures. Okay. All right. So that completes the difficult questions that we had in this paper, November 2022, paper 2, variant 2. ये हमने सारे कर लिए. ठीक है. अब जून 2022 वाले पेपर्स देखते हैं. पेपर 2-1 से 2 क्वेश्चंस हैं और पेपर 2-2 से 2 क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे जो मुझे बहुत मुश्किल लग रहे थे. इनके 2 क्वेश्चन थे, so we'll do just 4 more questions and then we end. So May June 2022 paper 2 variant 1. ये हम पेपर देखने लगे हैं. इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं पहले और फिर क्वेश्चन नंबर 9. Let's start with this one, but before we do that, let me just connect my charger because the battery is just about to die. You could not want that. Give me a few seconds and we'll be done. So हमने नवंबर 2022 वाले पेपर सारे कर लिए. दोनों पेपर्स के जो मुश्किल वाले क्वेश्चन है वो हमने देख लिए. अब जून 2022 वाले पेपर्स के हम कुछ मुश्किल क्वेश्चंस जल्दी से देखते हैं. ठीक है, you can also find a lot of other helpful content both for maths and add maths in the description of this video below. You might find that helpful. Maths के लिए तो अब इतना time नहीं है, but those of you who take add maths and those of you will be studying A-level maths. So I primarily teach A-level maths. वैसे I don't teach O-levels a lot, but I'm just doing these YouTube sessions for the exam tomorrow. For A-levels, you'll find a lot of content. In fact, the complete syllabus covered on this channel. Hopefully, you should find that helpful when you start your A-level maths. Okay, let's start with this then. So I've sorted this out now. The charger is working. That's connected. Okay. May June 2022 paper 2 variant 1. Let's start with this one. This is question number 7 से देखते हैं. 7 start करते हैं. Okay. Yasir travels to work either by car, bus, train, or bike. The probabilities of using these means of transport on any workday are shown in the table. Okay, find the value of P. Now, of course, the total probability has to be 1. So P की value कैसे आ जाएगी? Minus कर दें 1 में से बाकी सारे numbers. So 1 minus 0.12 minus 0.40 minus 0.26, and that should give you the result. Let's see what that turns out to be. 1 minus 0.12, 0.4, 0.26, and that is giving me 0.22. Okay, so that's what the value of P here should be, 0.22. Well, that's pretty straightforward. Let's have a look at the second one now. It says find the probability
that on Monday and Tuesday, he travels to work by train on one day and by bus on the other day. Okay, Monday or Tuesday में को he travels by bus on one day and by train on another day. अब देखिए उसने specify नहीं किया, उसने specify नहीं किया कि किस दिन वो ट्रेन पे जा रहे हैं और किस दिन वो बस पे जा रहे हैं. So that's something that you need to be a bit careful about. ये भी हो सकता है कि वो पहले बस पे जा रहा हो, पहले मंडे को बस पे जा रहा हो और ट्यूसडे को ट्रेन पे जा रहा हो, या फिर मंडे को ट्रेन पे जा रहा हो, ट्यूसडे को बस पे जा रहा हो. You have to consider both possibilities. Okay, so एक possibility क्या है? First day by train and then by bus. Okay, that's one possibility. And the other possibility is first by bus and then by train. तो जब वो पहले ट्रेन पे जाता है, फर्स्ट डे ट्रेन पे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.26. And by bus on the second day, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.4. That's one possibility. Or there's another possibility. And that other possibility is that he goes to bus on Monday and then by bus on Monday and then by train on Tuesday. बस पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है मंडे को? That's 0.40. और ट्रेन पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है ट्यूसडे को? 0.26. ये दो केसेस आपके पास बनते हैं. You add these two cases up and you see what that turns out to be. एक निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है. 0.4 into 0.26 multiplied by 2 and that's giving me 0.208 and that's what you get here. Okay, so this result should be 0.208. That's our final answer here. All right, let's have a look at part 3 now. It says find the probability that he travels to work by bus at least once on Wednesday or Thursday. Okay, now what does that mean? Wednesday or Thursday, there are two consecutive days. We need to find the probability that he travels to bus at least once on Wednesday or Tuesday. दोनों में से at least एक दिन तो जाए बस पे. Okay, अब से क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं? देखिए, एक आपका फर्स्ट डे है, ठीक है, एक आपका सेकंड डे है. ऊपर भी हम इस तरह की रिप्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते वैसे, बट यहाँ पे ज्यादा केसेस बनाने पड़ेंगे तो वी कैन डू इट लाइक दिस. बस से जाता है एटलीस्ट वंस ऑन दीज 2 days, दोनों में से एटलीस्ट एक दिन. अब क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं इसमें? वन पॉसिबिलिटी इज कि वो बस से जाता है फर्स्ट डे पे और सेकंड डे पे बस से नहीं जाता. एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है that he goes by bus on he does not go by bus on the first day and he does go by bus on the second day. And there's another possibility that he goes by bus on both days. ये 3 पॉसिबल केसेस आपके पास बनते हैं, ठीक है. ये आप तीनों केसेस निकालेंगे, इनको ऐड कर लेंगे. Now he goes by bus on a day, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4. ओके, तो एक दिन पॉइंट गया तो 0.4 इसकी फर्स्ट केस की आ गई, और दूसरे दिन बस पे नहीं गया तो बस पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो बस पे ना जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 minus 0.4, that's 0.6. So that's 0.4 into 0.6. सेकंड केस क्या आएगा? अगेन 0.6 into 0.4. बस पे ना जाने की प्रोबेबिलिटी 0.6, बस पे जाने की probability 0.4, and that gives you this, right? So that's the first case, the second case, and then you have the third case. He goes by bus on both days. At least once का गाय ना उसने, तो एक से ज्यादा भी हो सकता है. So 0.4 into 0.4. ये 3 cases हैं, इनको add कर लें, and that should give you the result. Okay, ये देखते हैं क्या आता है. 0.4 into 0.6 plus 0.4 into 0.6 plus 0.4 into 0.4, and that's giving me 16 over 25, which is 0.64. And that is your final answer here. Now, this is one way of doing this. This is one way of doing this. एक और तरीका इसका ये हो सकता था, आप probability निकाल लेते कि वो दोनों दिन बस पे नहीं जाता, दोनों दिन बस पे नहीं जाते. नहीं, जो उसने कहा हुआ है एटलीस्ट वंस, उसका उल्टा वो निकाल लें. क्या है कि दोनों दिन ही वो बस पे नहीं जाता, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, और उसको टोटल में से माइनस कर दें. 1 प्रोबेबिलिटी टोटल है, 1 में से दोनों केसेस, 1 में से एक केस माइनस कर दिया,
that would give you the same result as well. That could have been another way of thinking about that. Slightly different way of looking at it, but it makes your calculation much quicker and it'll give you the result in one single line. Right? कि आपने उल्टा केस निकाल लिया और 1 में से वो वाली probability minus कर दी, and that gives you the same result as well, 0.64. Okay? अच्छा, let's move on. Part B. It says Yasser records the length of time he spends at work on each of 70 work days. The table below shows the results. ये table आपको नजर आ रहा है. We have to complete the histogram to represent the data. Remember, histogram में vertical axis के ऊपर frequency density होती है. Keep that in mind. So we have to calculate frequency density here first of all. Let's do that. Class widths हम देखें. First में so class width का ये call row add कर लेते हैं. First में 2 है, फिर 1 है. 7.5 minus 7, that's 0.5. 8 minus 7.5 is also 0.5. 8.8 whole 3 over 4 का क्या मतलब है? 8.75. 8.75 minus 8, that is 0.75. And then 10 minus 8.75, that would be 1.25. आपको क्या करना है? Frequency densities निकालनी है. FD, let's calculate that. What is frequency density? It's frequency divided by the class width. Okay, so 2, 6 over 1 is 6. देखें आपको पहले दो बार इस तरह नजर आए होंगे. Yeah, 2 and 6. So this number is 2 here. And the second number is 6 here. ये उसने दो प्लॉट किए हैं. Next, अब आपको प्लॉट करने हैं 9 over 0.5. That should give you 18. 23 over 0.5. That should give you 46. 18 over 0.75. Let's calculate this. 18 divided by 0.75. That is 24. And then 10 divided by 1.25. That's giving me 8. ये आपको प्लॉट कर देना है यहाँ पे. 7 से लेकर 7.5 तक you have 18. ये आप रूलर से करेंगे, ठीक है. Now my ruler tool does not work very well on OneNote, तो मैं इसलिए इसको इस तरह कर रहा हूँ, लेकिन आप ये रूलर से कर रहे होंगे. ये आपकी फर्स्ट बार आ गई 18 पे. Next one is going to be at 46. Okay, 46 is going to be here. 7.5 से लेकर 8 तक, right? ये 46 पे आपका एक बार बन रहा आएगा. Which is going to look like this. ठीक है. Next you have 24 from 8 to 8.75. 8.75, 24 यहाँ तक तकरीबन, ठीक है. 8.7 और 8.8 के दरमियान में और vertical axis पे 24. This is going to be the next bar. ठीक है, दो बॉक्सेस के मिडिल में आ रहा है. अगेन ये आप रूलर से बनाएंगे, ठीक है. अच्छा, then the last one is 8 until 10 here. Okay, this is what your histogram is going to look like. That's 3 marks. Now let's check the next part. Now it says Yasser starts work each day at 9 a.m. He is paid overtime if he works later than 5:15 p.m. Estimate the number of days he is paid overtime during these 70 work days. अच्छा, ये क्या information थी? 70 work days की information थी और उसमें से टाइम दिया हुआ है कि कितने दिन उसने 4 to 6 hours काम किया, कितने दिन उसने 6 to 7 hours काम किया, कितने 7 to 7.5 hours काम किया, and so on. Now he starts work at 9 a.m. 5:15 के बाद उसे ओवर टाइम मिलता है, तो कितना टाइम बना ये? 9 से 5 तक 8 hours हो गए. 8 hours 15 minutes कितना हो गया? 8.25 hours. ठीक है, 8.25 hours से ज्यादा अगर वो काम करता है तो फिर उसको ओवर टाइम मिलता है. अब देखते हैं 8.25 hours किधर आ रहा है. इधर 8.25 hours तो हमारे पास इधर कहीं आ रहा होगा, इस जगह पे कहीं पे, ठीक है. 8.25, 8 और 8.75 के दरम्यान में. अब हमें ये फिगर आउट करना है कि ये नंबर कितना बनेगा, ठीक है. नाउ हाउ कैन वी थिंक अबाउट दिस? ओवर टाइम कितने लोगों को मिलेगा?
0.25 इधर आ रहा है और ये हो जाएगा 16। अच्छा फ्रीक्वेंसी भी देखते हैं, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। 10 वहां से और यहाँ से, या ओके। सो 8.25 से ज्यादा देखना है, ठीक है। अब ये 10 जो ये वाले लोग हैं, ये तो आपके पास आ ही रहे हैं, ठीक है। ये 10 तो आपके पास आ ही रहे हैं। अब बाकी आपके पास कैसे आएंगे? बाकी आपके पास आएंगे, आपको ये रेशो देखनी पड़ेगी एक तरह से। 8 से लेकर 8.75 में कितने लोग आ रहे हैं? 18 लोग आ रहे हैं, ठीक है। ये कितना इंटरवल बनता है? 0.75 का इंटरवल बनता है। 0.75 के इंटरवल में आपके पास 18 लोग आते हैं। आपको चाहिए कि 8.25 से 8.75 में कितने आते हैं। ये कितना इंटरवल बनता है? 0.5 का इंटरवल। तो एक तरह से 3:2 बन रहा है। तो 0.5 में कितने आने चाहिए? 3:2 है, राइट। सो ऊपर अगर ये 18 3 रहे तो 2 इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए? 12 होना चाहिए। एक तरह से आप इस तरह से कर सकते हो। 8.2 से आगे वाले, 8.25 से आगे वाले वाला रीजन जो है, दैट्स 2 आउट ऑफ 3 ऑफ द होल रीजन। सो 2 आउट ऑफ 3 ऑफ 18। 18 में से आप इतने लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर 10 तो बाकी आपके पास आ ही रहे हैं। तो ये टोटल आपके पास कितना हो जाएगा? 18 over 3, that's 6, 6 into 2 is 12, 12 plus 10, that should be 22। तो 22 लोग ऐसे हैं जो 8.25 के राइट साइड पे हैं। उससे ज्यादा 22 डेज ऐसे हैं जिसपे रफली वो 8.25 आवर्स से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो आपने कैसे फिगर आउट किया? 2/3 ऑफ 18। क्यों? क्योंकि ये टोटल 8 से 8.75 तक जा रहा था, हमें सिर्फ देखना था 8.25 से ऊपर वाला पार्ट। दैट्स 2/3 ऑफ दिस इंटरवल। सो 2/3 ऑफ 18 is what we start with, and then we say ये जो दूसरा 10 है वो तो आपके पास ऑफ कोर्स 8.25 से ज्यादा ही है, तो उसमें हम 10 ऐड कर देंगे, and that is going to give us 22, and that's our final result here. Okay, now again, this was a pretty tricky part, but this is what you do here. Let's do the second question that I want to do from this paper. Question number 9. Let's have a look at this. It says, the diagram shows the positions of 3 towns A, B, and C. B is in a bearing of 72 degrees from A. Okay, B is in a bearing of 72 degrees from A. A पे north जो बना हुआ है उससे 72 degrees clockwise, तो ये angle जो है 72 degrees है। C is in a bearing of 150 from A. C is in a bearing of 150। इसका मतलब ये है कि जो total angle है, this is 150 degrees। 150 में से 72 minus कर दें, what do you get? You get 78। That means this angle here should be 78 degrees, right? दो लेंस इसने दी हुई डायग्राम पे नजर आ रहा है। उसने कहा फाइंड द बेयरिंग ऑफ A फ्रॉम C। ओके, A फ्रॉम C। C से बेयरिंग आपने देखनी है, C पे नॉर्थ बनेगा A की। सो यू आर लुकिंग फॉर दिस एंगल हियर। ये पूरा एंगल चाहिए। हाउ डू यू फिगर दैट आउट? Let's think about this. Let's see the information that we are given. We are given. देखें, इसमें बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं चाहिए नहीं चाहिए, because this is only 1 mark, तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। Let's think about this. We know that this is 72, but this is 78. What about the remaining angle on this vertical line? ये बाकी एंगल कितना बचा? टोटल 150 था ना ये, वैसे भी तो 150 180 में से माइनस किया, this angle, remaining angle should be 30 degrees. If this is 30 degrees, इसके alternate angle आपको यहाँ पे मिल रहा है, this is also going to be 30 degrees, right? तो बाकी एंगल कितना बचा फिर आपके पास जो आपको बेयरिंग चाहिए? That would be 360 minus 30, and that turns out to be 330 degrees. Okay, so this angle turns out to be 330 because of that reason. ठीक है, अच्छा, let's move on. Now it says calculate BC. Okay, this is pretty straightforward. I'll leave it for you. BC आपको निकालना है, ये हमने काफी किया है पहले भी। Let me just write down the equation for you, and then you can do this. A square equals B। क्यों कह रहे हैं? देखें, एक एंगल गिवन है और दो साइड्स गिवन है। जो एंगल है वो इंक्लूडेड एंगल है,
राइट। पेयर्स नहीं बन रहे हमारे पास, 300 के ऑपोजिट एंगल भी नहीं है, 280 के ऑपोजिट एंगल भी नहीं है, पेयर्स नहीं बन रहे, तो साइन रूल नहीं यूज कर सकते, कोसाइन रूल यूज करना पड़ेगा। कोसाइन रूल आपके पास इस तरह से होएगा, a स्क्वायर इक्वल्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc into cos of a. Just input values in this. एंगल के ऑपोजिट वाली साइड जो आपको चाहिए, दैट्स BC, वो आपके पास लेफ्ट साइड पर आ रही होगी, BC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द अदर टू लेंथ्स 300 and 280, 300 squared plus 280 squared minus 2 into 300 into 280 into cos of the angle is 78 degrees. ये आप पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें एक दो स्टेप्स आप दिखा देंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आप फाइनल आंसर लिख देंगे. Let me just do this on my calculator directly. 300 square plus 280 square minus 2 into 300 into 280 into cos of 78 degrees, and then you take square root of that, and that's giving me 365.34. ठीक है, इसमें एक दो स्टेप्स दिखा दें, उसके फायदा ये होता है अगर आपको फाइनल आंसर गलत भी आ जाए ना किसी वजह से, तो आपको पार्शियल मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं. So your final answer is 365 here. 3 significant figures if you want to round this off. Otherwise, आप 365.3 भी लिख देंगे, that's okay. अच्छा, let's move on. Town D is 145 kilometers from town B. Angle ADB is 120 degrees. Find the two possible bearings of D from A. Yeah, so this is actually the question why I chose this particular question. This part is why I chose this question. Let's have a look at this. Town D, is this related to the previous part? It doesn't look like it. ADB. Acha, वही extend हुआ है, but we don't really need any information from the previous part. Let's have a look at this. Acha. Town D is 145 kilometers from town B. B से 145 kilometers पे हमारे पास एक टाउन डी, अभी कहाँ पे है हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में है. उसने बताया, उसने कहा एंगल ADB is 120 degrees. Find the two possible bearings of D from A. You may add lines to the sketch to help you. अच्छा, इस पे आपको एक्यूरेट ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, उसने आपको ये बस डायग्राम दी है टू हेल्प यू विद योर वर्किंग. अब ये पॉइंट डी किधर हो सकता है? देखिए, एक तो 145 किलोमीटर्स है वो बी से, इसका मतलब ये है कि इस सर्कल के ऊपर कहीं भी हो सकता है. अगर हम बी पे सेंटर रख के एक सर्कल बनाए जिसका डिस्टेंस, जिसका रेडियस 145 है, तो इस सर्कल के ऊपर कहीं भी हो सकता है पॉइंट डी. अब एंगल जो है उसका बनता है जो ADB, दिस हैज टू बी 120 डिग्रीज. अब ये 120 डिग्रीज एंगल कहाँ पे बन सकता है? अब ये हो सकता है ये एंगल इस तरह ऊपर कहीं पे बन रहा हो. दिस इज वन पॉसिबिलिटी, राइट. हो सकता है आपका पॉइंट डी यहाँ पे ऊपर कहीं पर आ रहा है और ये एंगल 120 हो जाए, या हो सकता है पॉइंट डी नीचे आ रहा हो, इधर कहीं पे 120 बन रहा हो. वी डोंट नो दैट. So what we can do is we can consider two possible positions. Sorry about that. Two possible positions of the point D. हम कहते हैं या तो ऊपर आ जाएगा कहीं पे या नीचे आ जाएगा कहीं पे. ये दो possible cases बन सकते हैं. अब इनको यूज करके आप ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे. Now what do we know about this? उसने कहा B और D का डिस्टेंस कितना है? 145. तो ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर आप कंसिडर करते हो तो ये 145 है, नीचे ये 145 है. उसने एंगल भी बताया हुआ है, एंगल ये 120 है. ठीक है, अब अगर हमें फाइंड करना है इनफैक्ट बेयरिंग्स ऑफ D फ्रॉम A. ओके, तो हमें एंगल फिगर आउट करना है, रिमेनिंग एंगल. तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले पॉइंट को D डैश कह लेते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके दोनों पॉइंट्स को. ऊपर वाले ट्रायंगल हम देख रहे हैं पहले, ठीक है. उसमें व्हाट डू वी नो, 300 ये 120 ऊपर वाला एंगल है, एक पेयर पता है हमें. 145 साइड दी है दूसरे में, इसके ऑपोजिट एंगल निकाल सकते हैं हम. लेट्स कॉल दिस एंगल समथिंग, लेट्स कॉल दिस एंगल अल्फा. ये एंगल निकालते हैं, कैसे आएगा? साइन रूल यूज कर सकते हैं. वी कैन से साइन अल्फा ओवर 145 दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 120 डिग्रीज divided by 300.
ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लें, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, एक ये पॉसिबल एंगल हमारे पास आ सकता है। ठीक है, 145 into sine of 120 divided by 300 and then you take sine inverse of that, ये एंगल मेरे पास आ जाता है 24.74 डिग्रीज। दिस इज वन पॉसिबल ट्राइंगल दैट वी हैव। दूसरी ट्राइंगल में देखें, अगर नीचे वाले ट्राइंगल के अंदर, उसमें देखते हैं हमारे पास, अगर हम इसमें एंगल को कुछ कह दूं, इसमें इस एंगल का नाम हम बीटा दे देते हैं, ये एंगल क्या आ जाएगा, एंगल तो इसमें भी वही आ रहा होगा, राइट, 300 के ऑपोजिट वो है और 145 के, या तो एंगल तो ये भी वही आ रहा होगा। सो दिस एंगल, दिस इज अनदर पॉसिबल एंगल, ये भी अल्फा ही है, तो ये इसकी वैल्यू 24.74 आ जाएगी, एंगल की वैल्यू तो यही आ रही है। ठीक है, अब अगर हम ऊपर वाला पॉइंट डी कंसिडर करते हैं तो उसकी बेयरिंग क्या होगी, लेट्स फिगर दैट आउट। ऊपर वाला पॉइंट अगर हम डी कंसिडर करते हैं, चेंज कलर फॉर दिस, या अगर हम ऊपर वाला पॉइंट डी कंसिडर करते हैं तो हमें ये बेयरिंग चाहिए। हाउ कैन यू फिगर आउट दिस बेयरिंग? We know that this is 300. We know that this angle is what? Okay, yeah. So we know something from the previous figure. We know कि ये 72 degrees angle, right? B की bearing A से 72 degrees थी। इसका मतलब ये है जो total angle यहाँ तक है, this angle is 72 degrees. तो हमें सिर्फ ये चाहिए। So one possible bearing क्या होगी? एक possible bearing क्या होगी? ये ऊपर वाला angle, this one. What would this be? 72 minus alpha, which is 24.74. What does that turn out to be? Let's calculate this. 72 minus 24.74, and that is giving me 47.26. इसको 0 के साथ लिखेंगे, 047.26. That's one possible bearing. एक और possible bearing क्या हो सकती है, अगर हम नीचे वाला एंगल कंसिडर करें, नीचे वाला पॉइंट डी कंसिडर करें, इसकी bearing क्या होगी, ये पूरा एंगल, right? How can you find that? 72 में आप ये अल्फा ऐड कर रहे होंगे यहाँ पे. So the second possible bearing that we get here is 72 plus 24.74, and that is giving me 096.74. And now I can write down the answers. That was a 5-mark question. It was quite tricky. अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो उससे सोचना आसान हो जाएगा, डायग्राम के बगैर it's going to become pretty complicated. Okay, so ये दो हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं. एक आ रहा है 47 पॉइंट, उसने कोई इंस्ट्रक्शन देने थे यहाँ पे. ओके, सो 47.26. If you want, you can round it off to one decimal place, and that gives you 047.3 degrees. That's one possible answer, and the other possible answer turns out to be 96.74. You can say that's 96.7 degrees. These are the two possible bearings that we are getting from this. All right, let's move on. Let's move on to the next one. These were two questions from this paper, and now let's move on to the last paper. इससे दो questions देखते हैं. Paper 2-2, May-June 2022. Let's do 2 questions from this paper, and then we end. Let's start with question number 5. इसका सिर्फ एक part में देख रहा हूँ, part B. Part A was straightforward relatively. Let's have a look at this one. Question number 5, part B. A group of adults is also completed this puzzle. Okay, is this related to what we've done in another part? Oh yeah, it's not. So a group of adults completed some puzzle. Okay, a cumulative frequency diagram for their times is shown. एक puzzle है, वो solve करते हैं. ये diagram represent कर रही है उनके data को, कितना time लगा उनको. ठीक है. It says use the cumulative frequency diagram to complete the frequency table. उसने कहा 50 से 100 तक 8 लोग हैं. 50 से 100 तक 8 लोग हैं. आप देखें डायग्राम पे 50 से लेकर 100 तक 800 पे क्या पॉइंट आता है. दिस इज 8.
right? But that's a cumulative frequency diagram. Keep that in mind. Vertical axis पे you have cumulative frequencies. अब next आपके पास point क्या है 150. 150 पे जाके देखते हैं हमारे पास क्या आता है 150 पे. If you see in this axis, this is 30. But 30 is cumulative frequency. 100 से 350 तक कितने लोग हैं? 30 minus 8. And that would be 22. All right. The next number is 200. 200 पे जाके देखते हैं क्या आता है? 200 पे we have this point here, and that is giving me 66 here, right? Yeah, 66. 66 में से 30 minus करेंगे तो क्या आएगा? 36. This is 36 here. Next is 250. 250 पे देखें. 250 में मेरे पास ये आ रहा है 110 and then 112. 112 में से 66 minus करेंगे. What would that be? 12 plus 34. That's 46. Yeah, 46. And then finally 300 पे देखें क्या है? 120. 120 में से 112 minus करेंगे तो आपके पास आएगा 8. ठीक है. इन सब का sum in frequencies का क्या होना चाहिए? The sum of all of these frequencies should be 120. तो ये आपने frequency table complete किया है. ठीक है. इसमें cumulative frequencies नहीं लिखनी है, आपने यहाँ पे ये frequencies लिखनी है. ठीक है. अच्छा, second part is pretty standard. Median निकालना है. Median कैसे आएगा? Highest frequency 120 है. Cumulative frequency 120 है. Sorry, 120 का half करें 60. 60 पे देख लें क्या value आती है. On the horizontal axis, that's relatively straightforward. ये आपके पास आ रहा है. Okay, we have to be careful here. 10 boxes represent 50. One box represents 5 units. So this is 195. 200 minus 5, that's 195. So median is 195 here. Now the last part is important. 55% of the adults took between 125 seconds and k seconds to complete the puzzle. Use the cumulative frequency diagram to find the value of k. Okay, now how do we think about this? 55% of adults. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं 55% बनता कितना है? 55% of how many adults? Of 120 adults. आपको नजर आ रहा है डायग्राम पे 120 टोटल नंबर है. उसने कहीं पे नहीं लिखा है. यहाँ पे डायग्राम को देख के आपको इन्फर करना है. There's 125 people in total. 55% of 120. What would that be? 55 over 100 multiplied by 20. Let's see what that number turns out to be. 55 divided by 100 into 120. That's giving me 66. There are 66 people that we're talking about here. 55% adults took between 125 seconds and k seconds. Acha. 125 seconds. This is 125. 125 पे क्या नंबर आता है हमारे पास? 125 पे this number is 18. 66 adults हैं जिन्होंने 125 और k के दरमियान में टाइम लिया. आपने k की वैल्यू फिगर आउट करनी है. अब देखें 125 पे आपको क्या मिल रहा है? कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 18 मिल रही है. 18 प्लस 66, उस इंटरवल में 66 लोग होने चाहिए. तो 18 में अगर आप 66 प्लस करते हैं, what does that give you? 84. 84 पे आप जाके देखेंगे, this is going to be 84. इस पे आप देखें corresponding value आपको horizontal axis पे क्या मिलती है. This is 200, 5, 10, 15. So this is 215. 125 और 215 के दरमियान में 66 लोग आते हैं. तो उसने k लिखा हुआ था यहाँ पे. k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? Should be 215. That is what we were looking for in this part. ठीक है? So this was the tricky part, the last part of this question. That's what I wanted to do from this paper. And now let's move on to the last question from this paper. Before that, just a reminder to like the stream if you haven't already, and subscribe to the channel.
You'll find a lot of helpful content here for A-level maths as well, and possibly share with others if you thought that this was helpful for you. Let's move on to the next one now. Okay, last question from this paper. This is question number 10 from this same paper. Let's have a look at this. It says D is the point 46 and E is the point EE. The length of D is square root of 20. We need to form an equation in E and solve it to find the possible coordinates of the point E. Okay, D or E का distance उसने कहा square root of 20 है. Let's call this x1, y1 and this x2, y and y2. Distance formula लगा दें, x2 minus x1 whole squared, that's E minus 4 whole squared plus E minus 6 whole squared. Square root of this thing should be equal to square root of 20. ये आपने solve करना है और possible coordinates निकालने हैं E के. Okay, so let's do that. Square root खत्म करने के लिए दोनों साइड को square कर देते हैं. अंदर वाले part को expand कर लें. E square minus 8E plus 16 plus E squared minus 12E plus 36. On the other side, we have 20. Take everything to the left side. 2E squared minus 8E minus 12E, that's 20E plus 52 minus 20, that would be 32. Simplify this, that gives you E squared minus 10E plus 16 equals 0. Can we factorize this? We can use 8 and 2, 8E minus 2E plus 16. And that gives us two factors, E minus 8 and E minus 2. So E could either be equal to 8 or E could be equal to 2. These are the two possible values of E that we're getting from this. So E के coordinates आपके पास possible क्या हो गए फिर? E could either be 8, 8. उसने E लिखा हुआ था ना? या फिर हो सकता है 2, 2. These are the two possible points E that we were looking for. Okay, that's pretty straightforward. The first part was not very difficult. Let's move on. यहाँ पे लिख देते हैं in fact 8, 8 and 2, 2. ठीक है. अच्छा, ये first part है. That was 5 marks. Not that difficult. ये हो गया. Let's move on to the next one. F is the point minus 5 and minus F and 5F. The gradient of the perpendicular bisector of DF is 3 over 2. Find the value of F. Okay. We are given a point D there. That's 4, 6. Point D was 4, 6. अब DF का gradient क्या होगा? Gradient of DF ये क्या होना चाहिए? देखें. Perpendicular bisector जो है, perpendicular gradient अगर 3 over 2 है, तो जो perpendicular lines होती हैं उनका gradient एक दूसरे का negative reciprocal होते हैं. So 3 over 2 का negative reciprocal यानी sign change करना है और reciprocal कर लेना है. This would be minus 2 over 3. और DE का gradient आप खुद निकाल, DF का gradient आप खुद निकाल सकते हैं क्या? ये आपके पास point है, ये point D है और ये point F है. आप इनको use करके खुद से gradient में निकाल सकते हैं. y2 minus y1 over x2 minus x1. So you can say 5F minus 6 divided by minus F minus 4. ये आप खुद से gradient निकाल सकते हैं इसका इस तरह से. This should be equal to minus 2 over 3. इस equation को solve कर लेंगे तो आपके पास F की value आ जाएगी. Let's do that. We can cross multiply. 3 left पे जाके multiply होगा. We'll get 15F minus 18. On the right side, we'll have minus 2 into minus F. That's 2F plus 2 into 4. That's 8. Okay, so that gives us 13F equals 26. And the value of F turns out to be 2 from this. That is what we were looking for. That was 4 marks as well. Not that difficult. Marks ज़्यादा थे, but if you're able to figure this out, कि क्या process होएगा, it wasn't that difficult. Let's look at the last part of this now. It says the equation of the perpendicular bisector of DF is this. Find the value of K. Well, okay. DF की equation is दी हुई है, perpendicular bisector की equation. Now remember what bisector is. अगर आपके पास एक इस तरह से है ये, आपके पास F आ गया तो F point यहाँ पे points लिख लेते हैं. D point was 4, 6. And what about the point F?
f के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं -f and 5f. Okay, -f, so that's -2, and 5f, 5 into 2 is 10. ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं. तो अगर पॉइंट डी है यहाँ पे हमारे पास, कोई पॉइंट एफ यहाँ पर है, तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होएगा? इट विल बी अ लाइन दैट पासेस थ्रू द मिडल ऑफ दीज 2 पॉइंट्स एंड दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू इट. ठीक है, मिडिल से पास करनी चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लाइन हमारे पास दी हुई है उसने, ये इस पॉइंट M को सेटिस्फाई करनी चाहिए. कैन वी फाइंड द पॉइंट M दैट्स supposed to be the midpoint of D and F? midpoint फाइंड कर सकते हैं हम. लेट्स फाइंड दैट. 4 minus 2 over 2, x1 plus x2 over 2, and y1 plus y2 over 2. पॉइंट M हमारे पास क्या आ गया? 2 over 2, that's 1, and 16 over 2, that's 8. ये जो इक्वेशन है 2y equals 3x plus k, this is the equation of this line. Since it has to pass through the point M, it should satisfy that. तो हम लोग point इसमें input कर देते हैं. We say let's put 0.18 in this. That gives us 2 into 8 equals 3 into 1 plus k. इससे क्या होएगा हमारे पास? K की value आ जाएगी. So k is equal to 16 minus 3, which turns out to be 13. And that's the final answer that we get from this. We say k equals 13. All right. I hope that makes sense. That's it. So these were all the difficult questions that you had in the 2022 P2s for O-Level Maths 4024. I hope you found this helpful. If you like this video, make sure that you leave a like here, subscribe to the channel for more content later for Ad Maths and also for A-Level Maths. You'll find the whole A-Level Maths syllabus here if you choose to take Maths and A-Levels, hopefully. All the best for your exam tomorrow. Make sure that you sleep well now. It's already late. And tomorrow, when you are, let me just check what time your exam is. Okay, so exam is in the AM, so you should be going to sleep now. And make sure that you're fresh by the time your exam starts. And just one tip before I leave you, that you should be very careful about this thing, that you should not get stuck at any particular question. किसी भी क्वेश्चन पे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, it's okay. You don't necessarily have to do every question in order. आप stuck हो रहे हैं कहीं पे, leave that, go on to the next question, and you can always come back to that later. अगर आप stuck हो जाएंगे, आप उस पर एक क्वेश्चन पे 10-15 मिनट लगा देंगे, तो उससे मसला ये होता है कि एक तो क्वेश्चन भी नहीं होता, और फिर आगे आप पैनिक करना शुरू कर देते हैं बिकॉज बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम थोड़ा रहना शुरू हो जाता है. So if you get stuck at a question, you will get stuck. Everybody will get stuck at some point. It's okay. It's normal. You don't have to get every single thing correct to get an A star or an A. You still have a margin. आपने क्या करना है, अगर आपको कुछ मिनट्स में नहीं फिगर आउट हो पा रहा कि आपने कोई क्वेश्चन किस तरह से अप्रोच करना है, it's perfectly okay to move on. In fact, that's exactly what you should be doing. Move on to the next questions. Make sure that you do all the questions that you know how to solve. And then you will have enough time at the end to come back to that question and think about that again with a fresh mind, and you'll be more likely to figure that out at that point. Okay, so that's one thing that's extremely important that you need to keep in mind, along with having a good sleep. Make sure you check the stationery, of course. आपके पास सारी चीजें पूरी होनी चाहिए, your calculator should be working, and all the rest of the stationery should be with you. And I'll leave you with that. I hope this session was helpful. If you haven't looked at other videos on my channel and you want to do A-level maths later on, you can come back to it later after the paper to have a head start for A-level maths as well. And this should be really helpful for your next 2 years in A-levels. आपको इस channel पे सारा A-level maths का content complete
covered mil jayega, along with a lot of quick revision videos and yearly past papers. So I'll just recommend you to check that out after your exam, of course, not right now. And that's it. Thank you. And I'll see you later at another point in another video. Allah Hafiz and all the best for your exam.